So, hello everyone. So, let's solve the signal sense system question that has been asked in double E branch GATE 2026. Okay. So, GATE 26 में जो signal sense system के questions पूछे गए from signal sense system subject for double E branch. Okay. So, आइए बात कर लेते हैं. पहला question है, consider the infinite length discrete time sequence x of n equal to. Okay. So, let's solve here only. Yes. The student question is saying that कि x of n is equal to 0.9 की power mod of n. Okay. And examiner is simply asking for its ROC. Now student, you can easily solve this question if you know this fact कि a to the power mod of n, the common ROC is only possible if mod of a value is less than 1. And what is the common ROC, sir? Common ROC will be mod of z is greater than mod of a and less than 1 upon mod of a. Here a is nothing but the radius. Of the circle that we know. So student, अगर आपको इसका ये direct, if you know this direct form, then you can easily solve this question because ये form हम क्लास में पढ़ते हैं. अगर आपको याद था और जैसे आपने देखा कि a का वैल्यू 0.9 है and a का वैल्यू 0.9 है, it means if a value is 0.9, it means a value is less than 1. And definitely the final answer is nothing but mod of z is greater than mod of a. A value is 0.9. So mod of 0.9 and less than 1 upon mod of 0.9. That's it. And this is exactly present in the option number C. However, why mod is not required? Because radius never negative. So you can even ignore the mod also. So here mod of z greater than 9 and less than 0.9. Option number C is absolutely correct answer. अब सपोज करो कि ये फॉर्म अगर जिसको याद था उसने ऐसा कर लिया. If you are unable to, if you are just not, we can say that recognize this expression in the examination hall. If suppose that you forget this expression, and if you are not able to directly recall this short trick, then how to solve? So this is method number 1. If you will solve the same, if you want to solve the same question by using method number 2. So guys, in the method number 2, how to solve? Shall we say that कि sir here 0.9 की power mod of n. Okay. So tell me how to open. So we can just open it in the right hand side part when n equal to 0 to infinity. N equal to 0 to infinity means un. So we can write 0 to 0.9 की power n into u of n, and we can also write plus 0.9 की power minus n u of minus n minus 1. So don't you think the first form will give you the ROC mod of z a n u n, a to the power n u n ROC will give mod of z is greater than a, it means 0.9. And second thing, it is a left-sided form. So here you will get the ROC mod of z is less than a. What is a value? A to the power n. A value is 1 upon 0.9 because power में minus n है ना, 0.9. और जब इन दोनों को साथ में देखोगे तो अगेन ये रेंज बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई. So guys, for this particular question, correct answer is option number C only. Very easy question I must say, है ना. ये क्वेश्चन बिल्कुल गिफ्टेड क्वेश्चन था जो आया था और आई होप आप सबने ये क्वेश्चन कर भी लिया होगा. चलिए. So let's see one more question which is based on signal sense system. चलिए, अगेन ए वेरी बेसिक क्वेश्चन और ऐसा सेम PYQ इलेक्ट्रॉनिक्स में आया था. इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले ऐसा गेट क्वेश्चन आ चुका है EC स्टूडेंट्स के लिए. सिमिलर क्वेश्चन था ये. जरा क्वेश्चन को रीड करिए. Let XCT is the any continuous time periodic signal with the fundamental time period capital T. It is sampled uniformly with the period of TS where TS is not equal to 2, resulting in the discrete sequence xn equal to xc nts. Okay, definitely जब हम t को nts रिप्लेस करोगे तो वो डिस्क्रीट सक्सेसल बन जाएगा. Then which of the following statement is correct? स्टूडेंट, द सेम PYQs पे बेस्ड क्वेश्चन आया है. अगर आपने EC का PYQs किया था तो हमने ये सेम क्वेश्चन किया है. वहां ऑप्शन थोड़ा अलग थे. तो हमको पता है कि अगर x of t पीरियोडिक है तो x of n केवल कब पीरियोडिक होगा? जब द रेशियो ऑफ t and ts मस्ट बी द रेशियो ऑफ इंटीजर, और रेशियो ऑफ इंटीजर इज नथिंग बट रैशनल नंबर. तो आप देख रहे हो ये क्वेश्चन इतना आसान था कि ये डायरेक्टली आप देख रहे हो कि t और ts का रेशियो कब होगा, तो विल ऑलवेज पीरियोडिक. नो, ऑलवेज पीरियोडिक नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा ऑलवेज पीरियोडिक. तो सर ये होगा विल पीरियोडिक विद द पीरियड. नहीं, ये भी रॉन्ग है. इट नेवर पीरियोडिक, ये भी गलत है. x1n विल बी पीरियोडिक इफ एंड ओनली इफ t अपॉन ts और ts अपॉन t दोनों इज द रैशनल नंबर. रैशनल नंबर मतलब रेशियो ऑफ इंटीजर. तो ये तो था एक आसान तरीका अगर आपको डायरेक्टली ये चीज पता है तो. अगर नहीं पता तो देखो कन्वेंशनली कैसे करते. ऑल ऑफ यू नाउ फोकस ऑन द बोर्ड हाउ टू सॉल्व इट कन्वेंशनली. चलिए कन्वेंशनली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले आप ध्यान यहां देंगे कि सर ये सिग्नल बोल रहा है xt, आपको कोई सिग्नल बोला है एनी कंटिन्यूअस टाइम.
तो अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ एग्जामिनेशन हॉल में, और अगर आपने ईसी के पीवाईक्यूज नहीं किए हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको एग्जामिनेशन हॉल में कैसे करना था कन्वेंशनली, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इन अ कन्वेंशनल वे. सो लेट, क्योंकि कोई भी सिग्नल दिया है तो मैंने लेट किया, लेट एनी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, सो आई लेट एज ए कॉस ऑफ ओमेगा. ओमेगा ct मतलब c मतलब कंटिन्यूअस टाइम है, तो मैंने ओमेगा ct बोल दिया. ओके सर. And in this xt, if I will replace t with nts, then I will get here x of n. What is my x of n? My x of n is nothing but cos of omega c. Omega c t की जगह लिख दिया हमने nts. t की जगह लिख दिया nts. Yes sir. नाउ डियर स्टूडेंट, मेरे को बताओ डिस्क्रीट टाइम का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया सर. डिस्क्रीट टाइम के अंदर ये बन गया cos ऑफ, इन द डिस्क्रीट टाइम व्हाट इट विल बिकम, in the discrete time it will become, in the discrete time what it will become guys, in the discrete time it will become cos of so guys I think here we are having, you will see this. So let me rub this part. Okay, so I think eraser is not coming. Okay, now eraser is coming. Yes. So now student you can see here, I think am I audible? Audio clear? Yes. So student, when you will replace, so shall I write here xt equal to nothing but cos of omega dn. Okay. So what is omega d guys? Omega d is the discrete time signal frequency. Omega d is nothing but omega cn. Yes sir, omega cn. We know that in the continuous time the relation between the omega c and t, 2 pi upon omega c. Here omega c representing the frequency in continuous time domain, and omega d is the frequency in the discrete time domain. अच्छा, ओमेगा डी और फंडामेंटल टाइम में क्या रिलेशन होता है? n इज नथिंग बट 2 पाई अपॉन ओमेगा डी इंटू स्मॉल m. क्या होता है? वेयर ओमेगा डी इज द डिस्क्रीट टाइम फ्रीक्वेंसी, कैपिटल N इज द फंडामेंटल टाइम पीरियड विच इज द इंटीजर वैल्यू, स्मॉलेस्ट इंटीजर, एंड स्मॉल m इज ऑल्सो एनी इंटीजर. ओके, so when you will put this value omega d from here, omega d can I cross multiply n, so 2 pi by capital. So in place of omega d I am writing 2 pi by capital N into small m, 2 pi by capital N into small m, and from here I am writing omega c in terms of capital T. Omega c, if I cross multiply I should get 2 pi by capital T here. Just substitute the value of omega c here, that is nothing but 2 pi upon capital T into n. So now you can see guys, 2 pi and 2 pi directly get cancel out. So the ratio of TS, the ratio of even here 2 pi upon capital T na, yes, 2 pi upon capital T, and here is okay, sorry. So here I have written, I think by comparison na, it is not omega d n, so omega d value is TS actually, not sorry. So I have written here omega c n by mistake. It is actually omega d equal to what? Omega d equal to omega c into TS na, omega c into TS है. तो ये n नहीं है, it is not n, it is TS है. ये n नहीं है, TS है. आप अगर देख पा रहे हो अच्छे से, तो ये जो ओमेगा सी और TS है, ये मिलके ओमेगा डी बनाना. n तो एज इट इज, देखो ये n तो एज इट इज. तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे रेशियो आ गया सर हमारा TS अपॉन T इज नथिंग बट TS अपॉन T. TS अपॉन T इज नथिंग बट m अपॉन n. m भी इंटीजर है, n भी इंटीजर है. तो चाहे T अपॉन TS रेशियो ऑफ इंटीजर है अगर, तो T अपॉन TS का रेशियो भी तो इंटीजर ही होगा. तो रेशियो ऑफ इंटीजर मतलब होता है रैशनल नंबर. तो दैट इज वाई करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली. दैट इज वाई प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली. चलिए वन मोर क्वेश्चन है सिग्नल एंड सिस्टम का, बट क्योंकि वो डिफरेंशियल इक्वेशन में है तो उस क्वेश्चन को हम प्रॉपर्टी में सिग्नल में भी ले सकते हैं, मैथ्स में भी ले सकते हैं ना. तो यहाँ पे हमने उस क्वेश्चन को मैथ्स में ले लिया है, तो वो क्वेश्चन बड़ा आसान था डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो ये है हमारे सिग्नल्स एंड सिस्टम पे क्वेश्चन थोड़े कम आए है ना. वी आर एक्सपेक्टिंग मोर क्वेश्चंस, बट दिस टाइम हम गेट एग्जामिनर सरप्राइजेस. ओके, क्योंकि डबल ई में सिग्नल्स एंड सिस्टम का क्वेश्चन थोड़े कम आए हैं इस बार. ओके बच्चों, सो मिलते हैं हम नाउ. आफ्टर दैट वी विल सोल्व द क्वेश्चंस ऑफ कंट्रोल सिस्टम दैट हैज बीन आस्क्ड इन डबल ई ब्रांच एंड गेट 2026. ओके गाइस, सो हेलो एवरीवन, लेट्स सोल्व कंट्रोल सिस्टम क्वेश्चंस. ओके, दैट हैज बीन आस्क्ड इन डबल ई ब्रांच GATE 26 paper. Okay, so as you all know, GATE 26 response sheet release. So from the master paper we are solving the question. So here in the master paper question number 13, control system. Okay, asked in EE 26 GATE. So now guys, let's see the question. The Laplace transform of the step response. It means this is step response given to us. Okay sir,
Step response is given to us. Okay. Okay. Now, student, the rise time is defined as the time taken for the response 0.129. Okay, final value. The settling time is defined for the 0.98 of the final 98% of the final value. Okay. Then for this system, the rise time, settling time, and the time constant value is asking simply. So, do you know, student, what is the transfer function? What is the transfer function? Ys upon Rs. Ys upon Rs is nothing but Rs is unit step response. So step response means 1 by S value you can cross multiply. So you will get 100 upon S plus 100. This is your first order system transfer function. And do you know in the first order system transfer function what is the time constant? Constant is nothing but -1 upon a real part of the pole. What is the pole value here? When you will find the pole value S plus 100 ko 0 karo, you will get the root -100. So -100 root. It means simply what is time constant, sir? Time constant is nothing but -1 upon the real part of pole. -1 upon real part of pole. Okay, sir. So when you will do this, minus ka 1 upon real part of pole is -100 only. Minus get cancelled. So time constant is nothing but 0.01. So for sure, time constant is nothing but 0.01. And when you will observe here time constant 0.01, it means option number A में भी आ रहा है, B में भी आ रहा है और अदर बाद में भी आ रहा होगा, चेक कर लेंगे. But अभी बाकी चीज में निकाल देते हैं. First we should find settling time. Okay. We all know that settling time definition for the 98% of the final value is 4 times of time constant. And if it is 0.95, suppose that अगर ये 0.95 होता, then it will be 3 into time constant. So because it is asking for the 98% of its final value, so TS will be 4 into time constant. So when you will multiply settling time equal to, you will get 4 into time constant, and time constant value is nothing but 0.01. Hence the time constant value is nothing but 0.04. Now tell me guys, which option is matching? So 0.04 is matching, 0.01 is matching. Option number A अभी तक हमको दिख रहा है. Option number A can be correct. Okay, sir. So now student, last thing, we are left with the only rise time. And do you know in the first order system, the rise time formula, for the first order system, the rise time formula is nothing but 2.2 time, approximately 2.2 time of time constant. So when you will multiply 2.2 times of time constant, what is the time constant here? The time constant value is 0.01. When you will multiply 0.01, you will get 0.02. 0.022. 0.022 is exactly present in the option number A. So that is why for this particular question, option number A is matching with all the 3 data, whether we talk about time constant, settling time, as well as the rise time. So the final answer for this question, perfect answer for this question is option number A for Ahmedabad. Now guys, let's solve the next question. Question number 13 we completed. Let's see where we have the next control system question. Question number 29. Okay. I just noted it so that we can save the time. Question number 29. Okay. Is 16 only. We are looking for question number control system questions we are solving here. Question number 29. Okay, so let's see question number 29. This is question number 30. So question number 29. Okay guys, again a very easy question I must say, because it is depending on the simple inverse body plot. So if you attended our classes guys, all the control system questions are very easy here. Okay, so how to solve this? Come on, can you please tell me guys? Here only we'll solve because not much space is required to solve this. Student, while making the transfer function from the body plot, inverse body plot, why I'm talking inverse body plot? Because this time you no need to make the transfer like body plot from the transfer function, because in the body plot generally we are constructing the body plot from the transfer function. Why I told inverse body plot? Because here already magnitude body plot is given to you and examiner is asking for the transfer function. So to find the transfer function, we have to follow the 3 steps I told you many times. First step is observe the initial slope. It will provide the information about poles and zeros at origin. Step number 2, observe the change in slope at each and every corner frequency. That will provide the information about poles and zeros, or that will provide the information about first order and second order factor.
and the step number 3 is y equal to mx plus c where we can find the value of gain k. बट यहाँ ऑप्शंस में सब इस तरह से गिवन था तो k का वैल्यू निकालने का नीड नहीं है, केवल ऑप्शंस में जीरो पोल को आइडेंटिफाई करके यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शन. What is the first step? First you need to check the initial slope. Initial slope is minus 20 dB per decade. We know that minus 20 means one pole, plus 20 means one zero. So minus 20, it means if I wish to write the transfer function, because of initial slope is minus 20 dB per decade, it gives me one pole at origin. It gives me one pole at origin for sure. It means एक pole तो origin पे पक्का आएगा. Now student, as soon as omega naught frequency will come, there will be a change in slope and the minus 20 slope will become 0 dB. It means what we should do with minus 20 slope so that it will become 0. Minus 20 dB per decade में क्या किया जाए कि वो 0 बन जाए? अब बोलोगे plus 20. Plus 20 means what? Plus 20 means again 0. 0 means we should write in numerator. So shall we write like this 1 plus s upon omega naught? Shall we write like this 1 plus s upon omega naught? Yes or no? So it means one pole at origin and 1 plus s upon omega naught. And that exactly mentioned in the option number A. Option number A only satisfying this. S upon omega naught is because we don't know the k value. So k value you can say that 1 upon omega naught is nothing but k. Okay. And why it is k? Because we know that whenever the type 1, whenever the system is type 1 and the initial slope is minus 20, then it will intersect at this 0 dB line, that omega is nothing but k. तो अगर ये 0 dB लाइन है तो ओमेगा 0 इक्वल टू k बोल सकते हो, है ना. तो इन शॉर्ट अगर बाकी सारे ऑप्शन देखो तो वो वैसे ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं. ये वाला कंसेप्ट अगर आप ना भी लगाओ तो भी आंसर करेक्ट है. क्यों करेक्ट है तो बताता हूं आपको. क्योंकि देखो s अपॉन ओमेगा नॉट केवल एक ही ऑप्शन ऐसा था, ओनली वन ऑप्शन वी हैव व्हिच इज हैविंग वन पोल एट ओरिजिन. केवल इसी में एक पोल ओरिजिन पे है, बाकी में नहीं है. तो इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. चलिए बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53. लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 53 पर रुक जाते हैं एक बार. 53, 46 आ गया है. 53. So let's solve question number 53. 53 and 52 also. 52 and 53. Okay. So 52 and 50. However, this question is also look like signal system, but you can solve in mathematics also. Okay. So if I will consider this question in signals, then also fine. Otherwise, by using the mathematics also. अगर signal से करोगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से कर सकते थे. So the next question is question number 52. So now guys see the question. What question examiner is saying? A, B, minus A and minus B values is given to us, and examiner is asking for the A, B values. Okay. Okay. So very easy question. Simply pole equations. Okay. Simply pole equations. Sorry. बस ऊपर चलते हैं. अब इस क्वेश्चन को भी हम यहीं पे सोल्व कर लेंगे क्योंकि आई थिंक ज्यादा कुछ इसमें है नहीं. ओके, जस्ट टेल मी. हाँ बस यहीं पे रुक जाते हैं एक बार के लिए. यहीं पे रुक जाते हैं. रुक जाना नहीं, यहीं पे रुक जाना है भाई साहब, यहीं रुक जाना है. भैया जी यहीं रुकिए. चलिए रुक गए. अब देखिए बच्चों, ऑल ऑफ यू जस्ट लेट मी नो. चलो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एबीसी मैट्रिक्स इज गिवन टू अस. दिस इज ए मैट्रिक्स. ओके, दिस इज बाय द वे ए मैट्रिक्स. This is your B matrix. This is your C matrix. What are the values of AB for which the poles of the transfer function are at minus 2 plus minus 3j and minus 2 minus 3j? So it means poles are given to us, and we all know that pole value is nothing but determinant of Si minus A equal to 0. So if you know the control system, then we know in the control system to find the pole from the state matrix, it means we have to find the determinant of Si minus A equal to 0. That will give us the pole. So if this is A matrix, can I write Si minus A? Si means if I will multiply I, then it will be S0, 0, S, Si minus A. Minus A means we should write here AB minus A. We should write here AB. Okay, we should write here AB minus AB minus A and 0. So this is nothing but Si minus A. So when you will do this, you will get S minus ka A, minus ka B, and 0 minus minus plus A. And here you will get S minus 0 like this. Now tell me guys, when you will find the determinant of this, when you will take the determinant of this mode of Si minus A,
you will get what? You will get s square minus ka as minus minus plus ab equal to 0. That you will get for sure. S square minus as plus b equal to 0. And one pole equation you already got from this. So can you write the equation from this? Yes, sir, we can write. Equation can be s plus 2 ka whole square plus 9 equal to 0. So when you will open the bracket, you will get a plus b ka whole square, s square plus 4s plus 2 ka whole square, 4 plus 9 equal to 0. So here you will get s square plus 4s plus 9 plus 4, 13 equal to 0. Now student, this is equation number 2 and this is equation number 1. Just compare equation number 1 and 2. So when you will compare, you will get minus a equal to 4. Hence you will get a equal to minus 4. Yes, sir. And here 13. So when I will equate, when I will check this, then you will get AB equal to what? Then what you will get AB? Then you can see here the AB is nothing but 13. AB is nothing but what, guys? 13. When you will put the A value minus 4, so your B value is what? Your B value is nothing but minus 13 upon 40. Minus 13 upon 4. And do you know minus 13 upon 4 is what? Minus 13 upon 4 is minus ka 3.25. The final answer for this question is A minus 4 or B minus ka 3.5. Are you guys agree with me? Are you guys agree with me? Yes. तो A का वैल्यू माइनस 4 आया, B का वैल्यू माइनस का 3.5 आया. अब मैं चलता हूँ वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखो ये ऑप्शन नंबर डी फॉर दैट. A is minus 4 and B is minus का 3.5. Exactly option D is matching, guys. Exactly option D is matching. Okay. So question number 52 भी हमने कर दिया. Now we are left with the last question of control system, and that is nothing but this. And this is very interesting question. And because this question is a lengthy question, so I will just write the given data. I will just write the given data in the blank slide so that we can solve it this question easily. Okay. तो बच्चों फटाफट से यहाँ पे हम कुछ given data लिख लेते हैं. We should write some given data here. Okay. Just wait. I will write some given data here first. Yes, guys. So let's solve this question. यहाँ पे we are taking blank slide because question is very lengthy. So now coming to this part. A, B, C matrix is given to you. Okay, so I will write the given data first. A matrix 1, 2, minus 3, 0. So A matrix is given to us. Okay, chali. So A matrix is given to us, which is nothing but what? A matrix is what, guys? You can check. 1, 2, minus 3, 0. 1, 2, minus 3 and 0. Okay. What is the B matrix, guys? You can see. The B matrix is 1, 2. Okay. B matrix is 1, 2. What is the C matrix, प्यारे बच्चों? You can see the C matrix is 1, 2. Okay. ये भी 1, 2 है, ये भी 1, 2 है. C matrix is also 1, 2. Okay. Now, what exactly examiner is asking? They consider the new state vector z equal to दिया है और z equal to क्या दिया है? Z equal to दिया है 2, 1, minus 1, 0. 2, 1, minus 1, 0. चेक कर लेंगे डेटा एक बार. 2, 1, minus 1, 0 x. 2, 1, minus 1, 0 x दिया है. Okay, sir. And examiner is asking for कि what is the new state space representation of the system in terms of the new state vector z. तो z dot equal to az plus bu plus y equal to cz like this. यहाँ x था, यहाँ आपको z में कन्वर्ट करना है. That's it. ठीक है. तो सबसे पहली बात बेटा कि क्वेश्चन की शुरुआत कैसे की जाए कि यहां से क्या आप अब देखो एक बार डेटा देख लो. 1, 2, minus 3, 0. 1, 2, minus 3, 0. ठीक है, परफेक्ट. अब हम सारा डेटा देख लिया. नाउ व्हाट वी वांट राइट नाउ, व्हाट इज द स्टेट मैट्रिक्स? वी नो दैट स्टेट मैट्रिक्स पर ऐसा होता है x डॉट t इक्वल टू, डायरेक्ट मैं शॉर्ट में लिखूंगा तो स्टेट मैट्रिक्स ऐसा होता है कि x डॉट इक्वल टू ax प्लस bu एंड y इक्वल टू cx, बिकॉज यहाँ पे डी मैट्रिक्स तो है नहीं. तो ये सर होता है स्टेट मैट्रिक्स इन x. और एग्जामिनर क्या चाहता है हमसे? एग्जामिनर वांट अस टू रिप्रेजेंट द स्टेट मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ z. सो इट विल बी z डॉट इज इक्वल टू, इट विल बी az प्लस bu और y इक्वल टू व्हाट? cz. दैट एग्जामिनर वांट अस. तो ये पहले ये था, अब आपको ये करना है. तो सबसे पहले कैन आई फाइंड x वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z. So can I write here कि ये इधर आ गया तो उसका इन्वर्स हो जाएगा. Yes sir. So what I will write first of all solution.
Shall we write x is nothing but sir 2 1 minus 1 0 का inverse into z, shall we write? Because if this entire term will come here, then power will be inverse only. Yes. Now student, tell me, if I will find x, then what will be x? So you will say sir x value is nothing but its inverse. And what is the inverse value? Inverse is nothing but adjoint. Inverse is nothing but adjoint upon determinant. So what is the adjoint? In the adjoint, this position has been changed. So here is 0, here is 2. And this sign will be changed. This sign position will remain same, only sign change, matlab minus 1 1. So this is nothing but the adjoint, and finally we need to divide with the determinant also. So when you will divide with determinant, you will get 2 into 0 0, 0 minus minus plus 1. So again it will be plus 1, because 0 minus 1 0 minus minus again 1, तो plus 1 हो गया. 1 1 upon 1 तो 1 ही रहा, and it should multiply with z only. So it means x और z में relation आ गया, x equal to 0 minus 1 1 2 z. I think this यहाँ तक की बात आपको I think clear होना चाहिए. I think it should be crystal clear to each and everyone, because ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था. अब आपने 0 minus 1 1 2 निकाल चुके हैं. अब हम इस मैट्रिक्स में in this representation we will just put it this. We will just put this. Okay. तो जब पुट करेंगे इसको, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये x इक्वल टू ये है ना. अब इसका डॉट लिया जाएगा तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा a, ये जो भी मैट्रिक्स है इसको, ये बाहर आ गया तो z डॉट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा. तो मैं अगर यहाँ लिखूं आपके सामने, यही लिख दूं मैं, in terms of z, wherever is z I will put, wherever is x ना बच्चों, I will put what, बताओ जरा. अब मैंने x निकाल दिया है, तो यहां भी इस वाली इक्वेशन में जहां भी x है ना, वहां मैं ये वाला पुट करूंगा. इसको मान लीजिए आप pz बोल दो, pz है ना. तो मैंने यहां पे जब किया, उसको डिफरेंशिएट किया, तो shall we write here इस मैट्रिक्स विल बी सर एज इट इज. ये मैट्रिक्स एज इट इज आएगा, जिसको आप बोल रहे हो 0 1, या अगर मैं इस पूरे को p मान लिया, मान लेते हैं इस पूरे को हम p मान लेते हैं अभी के लिए मैं p मान लिया, तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सर p डॉट z डॉट इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह लिखेंगे आप, a इंटू एक्स की जगह लिखेंगे आप, a इंटू व्हाट इज x, x की जगह लिखेंगे p इंटू z, x की जगह लिखेंगे p इंटू z प्लस बताइए यहाँ आ जाएगा सर b. अब बताइए b के साथ u आ गया क्या? हाँ सर b के साथ u. बताइए सिमिलरली y इक्वल टू, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका c, और x की जगह क्या लिखोगे आप, pz. इस तरह से आपका न्यू इक्वेशन z में बन चुका है, केवल सिंप्लीफाई करने की देर है. तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं मैं यहाँ पे, और नेक्स्ट स्लाइड में हम लिखते हैं pz नॉट. तो p का वैल्यू कितना है, 0 minus 1 1 2 लिख रहा हूं मैं, 0 minus 1 1 2. थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको, 0 minus 1 1 2 ओके z. तो ये z डॉट है, इक्वल टू लिखा है apz. ओके, a मैट्रिक्स क्या था, a मैट्रिक्स आपको पता है, अभी लिखूंगा मैं आगे से देख के. p मैट्रिक्स तो यही था, दैट इज 0 minus 1 और 1 2. 0 minus 1 1 2 था ना, चेक कर लो. 0 minus 1 1 2 था. a मैट्रिक्स था 1 2 minus 3 0, 1 2 minus 3 0, 1 2 minus 3 0. आप चेक करेंगे 1 2 minus 3 0. ठीक है सर, ap. अब यहाँ क्या लिखना था, apz था क्या, apz था, apz a आ गया, p आ गया, z आ गया, प्लस b मतलब क्या था, 1 2 था क्या b. बस चेक करना b क्या था, b था 1 2 सर, डेफिनेटली 1 2. 1 2 इंटू u था, b इंटू u था, b तो u था, b u था. ओके, b u आ गया. तो पहले ये सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद y इक्वल टू c पे जब बाद में कर देंगे. ठीक कर देंगे सर. ओके, नाउ स्टूडेंट टेल मी कि सर यहाँ पे इस मैट्रिक्स को जब इधर लिया जाए, पहले हम इसको मल्टीप्लाई तो कर लें. तो मान लीजिए ये मैंने एज इट इज रखा है इधर लेफ्ट साइड वाला पार्ट, इनको पहले रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई कर लो. तो 1 इंटू 0, देखो 1 इंटू 0, और 2 इंटू 1, तो ये 2 आ गया क्या, बिल्कुल आ गया सर. तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर. तो ये देखा मैंने, रो ये लिखा, कॉलम लिख दिया सर. आगे बताओ 1 इंटू माइनस 1, 2 2 जा 4, तो ये 3 आ गया क्या, देखो 2 2 जा 4, तो ये 3 आएगा सर, बिल्कुल. अब बताइए ये -3 इंटू 0 0 इंटू 0 आ गया सर, और -3 इंटू -1 +3, और ये 0 तो +3 आ गया सर. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ लिख दिया z, और यहाँ लिख दिया हमने 1 2 u, यहाँ लिख दिया हमने 1 2 u. इज दिस क्रिस्टल क्लियर? यस सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. हाँ बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे अभी भी क्या लिखा है, यहाँ अभी भी लिखा है 0 minus 1 1 2, और साथ में लिखा है z डॉट. अब इस पूरे को हमको उधर लेके जाना है, तो shall we write z डॉट इज नथिंग बट 2 3 0 3 as it is, and this entire part should come there, so it will be 0 minus 1 1 2 का इनवर्स. यस सर, का इनवर्स उधर इनवर्स हो जाएगा. एंड प्लस ओके सर प्लस ओके. Now tell me guys what it is. 1 2 as it is sir, u also as it is sir, and we should write this entire value, that is nothing but 0.
और क्या है -1, 0 -1 और 1 और 2 का इनवर्स। एक बार चेक कर लेंगे, बता देंगे ये आ रहा है, ये भी आएगा, बिल्कुल आएगा। और मल्टीप्लाई करने में आसानी हो इसलिए मैं 1 2 को जो है ना 1 2 को मैं आगे लिखता हूं ताकि मेरे को मल्टीप्लाई करने में आसानी हो, और कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लाई करना। तो बताइए फटाफट से z डॉट इक्वल टू, अब ये वाला मैट्रिक्स रहा एज इट इज 2 3 0 3 रहा एज इट इज, एंड हियर यू नीड टू टेक द अगेन इनवर्स। बताइए व्हेन आई विल टेक द इनवर्स हियर, these position going to be change, position change मतलब यहाँ पे 2 0 and this sign will be change मतलब माइनस will be +1 और ये -1, and finally we divide with the determinant मतलब 0 into 2 0 0 माइनस माइनस +1, सो आप डिवाइड किया 1/1 हो गया, तो ये यही रहा सर, और प्लस, ओके सर प्लस। इसका जब इनवर्स निकाला, क्योंकि ये इनवर्स सेम ही है, तो ये जो वैल्यू आया मैं वहां पे डायरेक्ट यहाँ लिखूंगा एग्जैक्टली, तो ये आया मेरा 2 1 -1 0 और यहाँ मिलेगा मेरे को 1। अब बस सिंपली वी आर लेफ्ट विद द लास्ट स्टेप, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहीं पे, वरना बार बार पीछे जाना, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा लिखूंगा मैं, उसको आगे जाके वापस लिख देंगे हम चाहे तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ। बताइए जरा ये क्या चल रहा था सर यहाँ? सर यहाँ पे z भी तो था साथ में, सर ये z था साथ में, z मल्टीपल साथ में है और वहां पे u मल्टीपल साथ में है, ठीक है। चलो अब रो इंटू कॉलम कर लेते हैं, 2 2 जा 4 एंड 3, 2 2 जा 4 माइनस का 3, क्या +1 आ गया क्या? यस सर +1 आ रहा है। एक बार यहां तक मेरे को बताएंगे, यहां तक की बात, सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक है, एक मिनट के लिए बता देंगे सर, ये जो वैल्यूज था 2 3 0 2 आ गया, 2 3 0 2 आ गया सर, और ये आ गया आपका 2 1, यस सर 2 1 और -1 0, परफेक्ट है सर, परफेक्ट ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको हमको मल्टीप्लाई करना है सिंपली, ठीक है, ओके सर। थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे वैल्यूज, ठीक है 2 3 0, ओके सर। So now student tell me when you will multiply what you will get, then we need to check। चल अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे होने वाला है, देखना आप ध्यान से देखना। चलिए थोड़ा सा शायद हमने क्या किया, हमने इस मैट्रिक्स को ना पहले लिख दिया बच्चों, क्योंकि ये इनवर्स जेड था ना, इनवर्स वाला फंक्शन जो था, इनवर्स वाला फंक्शन जो है वो मैं यहां लिखता हूं। 1 मिनट के लिए मेरे को टाइम देंगे आप, तो जस्ट वेट गाइस, जस्ट वेट। हाँ बच्चों, तो थोड़ा सा यार देखेंगे जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस थोड़ा सा आप चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा था बेटा, ये देखो ये 2 3 जो है ना, 2 3 के साथ में ये जब हमने इन्वर्स लिया तो इन्वर्स आगे आया है ना, तो थोड़ा सा मैं ना सीक्वेंस को साथ में लिखूंगा, थोड़ा मेरा ध्यान देना। ये जो इन्वर्स है ना, ये इन्वर्स आगे आएगा, एक्चुअली इन्वर्स आगे आएगा, ठीक है। तो ये इन्वर्स आगे आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, इन्वर्स अगर आगे आएगा सर, इन्वर्स अगर आगे आएगा सर, तो यहाँ पे क्या होगा जल्दी बताना। तो अगर यहाँ से इन्वर्स आगे आ जाएगा तो आप बोलोगे कि सर ये जो वैल्यू है, देखो ये 0 -1 और 2 का इन्वर्स ये है, और ये हम यहाँ लिखेंगे, ये यहाँ लिखेंगे मतलब क्या 2 3 और 0 3 हम यहाँ लिखेंगे एज इट इज, और यहाँ आ जाएगा प्लस सिंबल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट स्टेप में जो इन्वर्स आया ना, थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप वापस लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट स्टेप में वापस लिख देता हूँ, ये तो सेम ही है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो आपने लिख दिया 0, ये तो आपने लिख दिया, ठीक है, ये तो आपने सही लिखा है प्लस। अब यहाँ पे क्या करें बेटा, यहाँ पे जो इन्वर्स आया था ना, ये लिखेंगे पहले, इन्वर्स कितना आया था इसका सर, इन्वर्स आया था 2 1 -1 0, और यहाँ पे सर ये वैल्यू था एज इट इज 2 3 0 3, और इनटू था z, यस सर z, और ये था सर z डॉट। बस अब आप देखो, अब आप सोल्व करो फटाफट, तो क्या निकल के आएगा बताओ जरा। बोलोगे सर ये आएगा 2 2 जा 4, 1 into 0 मतलब यहाँ आ गया फर्स्ट टर्म 4, ओके सर। नेक्स्ट क्या आएगा, 2 3 जा 6 है ना, 2 3 जा 6 प्लस 1 into 3, तो ये 6 प्लस 3 तो 9 हो गया सर, 9 हो गया। फिर -1 दिस रो दिस कॉलम, -1 into 2 और 0, तो ये -2 आ गया क्या, -2। और लास्ट आपका बोल रहा है -1 into 3 0 into दिस, तो -3 आ गया, इस -3। 4 -2 -3, 4 और 9 -2 -3 आ गया, और यहाँ पे z भी आ गया, ये z भी आ गया प्लस।
इनको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 और ये 2 2 जा 4 हो गया क्या, 2 1 जा 2 और ये 1 इंटू 2 2 और 2 4 हो गया ये, और ये -1 और ये 0, तो ये -1 हो गया, 4 और -1 इंटू यू। तो आप देख रहे हो ए मैट्रिक्स आ गया, बी मैट्रिक्स आ गया इन टर्म्स ऑफ जेड, जेड आ चुका है। अब हम सी भी निकाल देते हैं, तो y इक्वल टू क्या था हमारा, बताएंगे आप यहाँ पे कि y इक्वल टू क्या था बेटा, CP/Z था सर, CP/Z। बताइए सी मैट्रिक्स क्या है, फिर P भी निकाल देंगे, CP/Z। ओके चलिए बताइए जरा, CP/Z था सर, है ना। तो हमने क्या लिखा है, CP/Z, C कितना है और P कितना है वो लिख लेते हैं, CP/Z था, CP। तो बताइए सी मैट्रिक्स कितना था, व्हाट इज द सी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स था सर 1 2, और P कितना आया था, P व्हाट इज द P वैल्यू, जिसको हमने बोला था P जब निकाले थे हम, तो P आया था सर 0 -1 1 2, 0 -1 1 2, 0 -1 1 2। बेटा ये ऑर्डर ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ऑर्डर को आप मिस मत करना। अब बताइए y इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से, 1 इंटू 0 2, तो ये 2 आ गया क्या, 2 आ गया सर, और ये आ जाएगा नेक्स्ट 1 इंटू -1 और 2 जब 4, तो ये 3 आ गया, और ये z आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि सी मैट्रिक्स आ गया 2 3, सी मैट्रिक्स आ गया 2। अब चलते हैं ऑप्शन पे फटाफट से और देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट, आइए। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 53। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन बोलूंगा मैं, लेंदी है ही बिल्कुल है, और एग्जाम में थोड़ा सा और टफ हो जाता है करना। जो हमारा आंसर जो मैच हो रहा है इसका, होना चाहिए शायद ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आंसर शुड मैच गाइस। ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है, डेफिनेटली सर हो रहा है ये। तो यहाँ पे आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्रिस्टल क्लियर। जो लास्ट में थोड़ा सा आपका ऑर्डर चेक करना है, वो आप गलती मत करना, ऑर्डर में आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो जब आप पी इनवर्स को, जो भी आपने पी को जब आप पी इनवर्स करोगे ना, तो वो फर्स्ट में आएगा, है ना, याद रखना। देखो यहाँ पे हमने वापस दिखा देता हूँ आपको, पी में जो पी इनवर्स आया था ना, ये देखो, ये जो है ना 2 3, ये तो एज इट इज रहेगा, और ये जब इनवर्स होकर आएगा तो ये पहले आएगा, ये बाद में नहीं आएगा, ये पहले आएगा, इधर भी पहले आएगा, इधर भी पहले आएगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस कंट्रोल सिस्टम एंड सिग्नल सिस्टम। Hello everyone, this is Sanjay Rathi. Now in this session I am going to solve questions from GATE 2026 electrical branch analog. Okay? तो बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस क्या हैं, कैसे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, और अच्छा खासा वेटेज है। तो पहला क्वेश्चन है, दिस इज ऑफ 1 मार्क्स, राइट। इट इज अ न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, परसेंटेज में आपको आंसर बताना है, एंड इट इज व्हाट बेस्ड ऑन व्हाट वोल्टेज रेगुलेटर गाइस। एक देख रहे हैं यहाँ पर, एक ट्रांजिस्टर लगा है, एक जेना डायोड लगा हुआ है, और IL ऑलरेडी एक करंट सोर्स दे दिया है। क्वेश्चन अच्छे से रीड कीजिएगा, पहले आंसर बनाने से पहले क्वेश्चन रीड करना जरूरी है गाइस। क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। इन द लीनियर रेगुलेटर सर्किट द बेस टू एमिटर वोल्टेज VB, दिस इज द बेस टू एमिटर VB is 0.6 volt. The Jenner diodes clamps the base voltage to 5.4 volt. Clamps मतलब it is a breakdown voltage is 5.4 volt. And that's why the base voltage will be fixed. Clamp means it will fix the voltage of base 5.4 volt. Base voltage. Clamp to the base voltage 5. Ignore the biasing current of the Jenner diode. There is no Jenner diode current and BJT. Ignore the biasing current of the Jenner diode and BJT. The maximum possible efficiency of the regulator circuit is, what is the maximum possible efficiency of the regulator circuit? What is the meaning of the efficiency means? Efficiency means we can say input power upon output power upon input power, output power upon input power, that may be the efficiency. अब यहां पर दो चीजें हैं, इग्नोर द बाइसिंग करंट ऑफ द जेना डायोड एंड BJT, means we can say there is a biasing current through the Jenner diode is negligible. So guys, in that case, what is the output voltage and what is the current given by this one, right? So one by I'm giving you the two method how we are going to calculate it is. So this is given as a, this is a nothing but series voltage regulator. In place of resistor one current source it is given, one Jenner diode is connected here, right? This is called VBE, this is called VZ, 5.4 it is given. Now here we are connecting the input,
Here one resistor is connected. The value of that resistor is what? 5 kilo ohm. The beta of the transistor is not given, 5.4 volt. Base voltage is 5.4 volt. It is a Zener diode. Maximum possible efficiency of the regulator. And the IL is given as 100 milliampere and VB is 0.6 volt. VB is 0.6 volt. It is given. 0.6 volt it is given. IL it is given as 100 milliampere. This is the load current. Now guys, if the efficiency, if from the question, if you are getting the idea, output power upon input power into 100%. If this is the efficiency, how much input power is converted into what? Output power. Then we have to calculate the output voltage at this point. Because the output power will become input power, output voltage, output current. Output current is nothing but the load current. Now, for full range of VI and for full range of load, Zener diode should be in breakdown region and this should be in active region. So from this point to this point, you will get the V0, that is called regulated voltage VZ minus VBE. So what is the VZ? 5.4 minus 0.6, you will get the 0.8, 4.8 volt. So this is the output voltage, regulated voltage, 4.8 volt. So that will become 4.8 into what? 0.1, because it is in a milliampere. Milliampere means 0.1 ampere. So this is the 0.48 watt, or you can say 480 milliwatt. That this is the watt, or 480 milliwatt is the input, is the output power. Now how we can calculate the input power then? Now there are two methods. Now if you want to calculate the input power, guys, what is the current given by this battery? So what is the value of the battery? 10 volt. It is given as a 10 volt is the DC voltage. 10 volt is the DC voltage. So first of all, this is the 10 volt connected here. Now what is the current given by the battery? So you can calculate the input power. V in I into I in. V in into what? I in. This is the input power, guys. How we can calculate then? Then V in into I in. V in is given as 10 volt. I in. Now this is the IC. This is what IR. And now what is the beta given in the question? Linear regulator, ignore the biasing current of the Zener diode, maximum possible efficiency of the regulator circuit. Okay. Suppose I am going to ignore the base current because the beta is not given. You can assume that the beta is infinite. If the beta is infinite, what is the Zener diode current? What is the base current? 0. And collector current and emitter current are equal. That is, what is the emitter current? This is the emitter current. This is the base current. This is the collector current. So emitter current is equal to what? 0. Emitter current is equal to 0. Right? Sorry, emitter current is what? 100 milliampere. Collector current is also 100 milliampere. Base current is 0. Now, what is the value of the IRs? So, because it is a 5.4 volt, it is what? What is the voltage at this point? 10 volt. There definitely there will be the current, and the complete current will pass through the Zener diode, because we are considering the base current is what? 0, because beta is what? Infinity. What is the value of the IR? IR is nothing but IZ. That is equal to 10 minus 5.4 upon what? R? 5 kilo ohm. That will become 4.2 upon 5. 4.6 upon 5. Right? This is in milliampere. 4.6 upon 5 you can calculate. This is the Zener diode current. 0.92. 0.92 milliampere. And what was the current here? 100 milliampere. So what is the total current given by the battery? IC plus IR. That is 100 plus 0.92. 100.92. And that's why it is given, guys. Neglect what? Zener diode current. Because Zener diode current is very, very small as compared to what? Load current. As compared to load current. And that's why you can, what is written here? What is written here?
Ignore the biasing current of the Zener diode and what BJT, because it is a very less as compared. This is the what 0.92 and it is what 100 milliampere. This is the 0.92 milliampere and that's why it is negligible as compared to that. You can also consider only 100 milliampere. That is the current given by the battery. So what is the input power? Now we have the V in I in, and that's why the input power will become what is the V in 10, what is the V of 100, 1000 milliwatt, or we can say 1 watt. Now what is the efficiency, guys? V out upon V in. So V out is what 0.48, V in is what 1 watt. What is the efficiency? P out upon P in into 100%. 0.48 upon 1, that is near into 100 means nearly equal to what 48%. And that is the answer for this question, guys. This is the answer for this question. Question number 33. So question number 33, we have the answer 48%, guys. 48%. Now, if suppose you are going to consider the Zener diode current, no doubt, if suppose you are going to consider this current 100.92, and that's why I have said we have the two solution. Then the input power will become V in I in. V in is the 10. What is the total current? 100.92. Right, you will get 009.2 right milliwatt, then 1.0092 watt. What will be the efficiency in that case? Output power is 0.48 upon input power 0.0092 into 100. That is less than what 48%. Less than 48%. 0.48 divided by 1.0092 into 100, and you will get 47.56%. So already it is given, ignore the Zener diode current, so that it will become 47, and that's why the answer, the range of the answer is given as what 47.5 to 48. 47.5 to what 48%. So both are correct. Already we have solved. Right, the answer for this question is 47. So already I have given, this is the 47 to 48%. Okay, so this is the important one. This is the efficiency, guys. Now, next question. Okay, this is the question number 34. It may be what analog, it may be what power electronics. So you can say no. Read question carefully. Consider the circuit shown. Assume that the diode D is ideal. This diode D. The supply voltage is 325 sine of 2 pi into 50t. L is given, R is given, the peak diode current rounded off to 1 decimal places. Always calculate the time constant first of all. What is the time constant? L by R. If the diode is what short circuited, when the diode is on, what is the time constant? L by R. 500 upon 10. That is what 50 microsecond, guys. Because it is in microhenry, it is an ohm, so it is the 50 microsecond. Now it is given omega t. What is the value of the omega? That is the 2 pi f is equal to 2 pi 50. So what is the f is equal to 50 hertz. Now always compare the time period of the signal and the time period. What is the t is equal to 1 by f. 1 by 50 is 20 millisecond. What is the time period of the signal? It is a very high. 20 millisecond is very high as compared to what 50 microsecond. Or you can say the time constant L by R is very less as compared to t. What is the half time period? 10 millisecond. Again the t by 2. Again it is a very less as compared to what t by 2. So
within a seconds you can solve the question, because in a positive half diode will be on. This is the positive half, 325 sine of 2 pi. So what is the peak value? 325. Diode will be on. This is the peak value. Now once the diode will be on, it will act as short circuit because it is the ideal diode. This is the inductor and this is the resistor. Now this is the value. In a positive half the diode will remain on. My dear friends, because the time constant is very low, suddenly the inductor will charge and inductor will reach to what? Instantaneous value of the current. What is the instantaneous value? Maximum value. For example, if it is the peak value 325, at that time it is a 10 ohm. Suddenly the inductor will reach to what? That value, peak value, because the time constant is very less. So 325 divided by 10, it is the answer is what? 32.5. That is the peak current through the diode. Or when I am going to consider, no doubt the time constant is not 0. L by R is not 0. It has some value, that is what? 50 microsecond. But it is very less as compared to what? T by 2. T by 2 is the time period of this. This is the 10 millisecond. This is the 10 millisecond. And that's why the inductor will suddenly charge. And what is the maximum current through the current? When the inductor is short circuited. So when it is the short circuited, what is the maximum? 325 divided by 10. That is the 32.5 or slightly less than that. Okay, practically it is a slightly less than that. You can also calculate that value, but not needed, guys. But not needed. How we can calculate? You can calculate what impedance, that is the R plus j omega L. Then the diode is on. What will be the maximum current? I is equal to V by what? That value. Then differentiate with respect to that and you can find the value at which point we are getting the maximum one. But quickly you can say to inductor, that is what? To 32.5. The range of the answer for the 32.3 to 32.5. Yes. Because when we are considering the exact value, you will get less than that. So in my detailed solution, I will give you the complete derivation of this question. Complete derivation, each and everything, how we are going to find that. Or you can also get that answer, what? 32, near to 32.3, guys. No doubt. This under ideal condition, just we are assuming L by R is very less than T by 2. That's why the inductor will suddenly charge during the positive half. And that is the maximum current, 32.5. Now, next question. We have number similar type of questions, guys, here. Then operational amplifier. Next question. Watch this, guys. Yes. In the circuit shown, open loop gain of the operational amplifier is 105. This is the practical operational amplifier. If any operational amplifier, if the open loop gain is given, this is called AV, 105. Means it is a practical op-amp. Practical op-amp. Right? What is the voltage gain of the circuit? But the RI is not given. RI is given, yes, infinite. R0 is given 0. This is the ideal values, but this is the practical operational amplifier. What is the voltage gain of the circuit shown in the figure? Minus 16.67, minus 20, minus 21, minus 12.67. Right? So this is the question number 37. So I am going to solve this question. This is a operational amplifier, guys, practical operational amplifier. This is minus, this is plus. Yes, is it audible? Okay. Now, practical operational amplifier, resistor. There are two ways to solve the question. Gain 100 is given. Remember, okay, 105 is given. 15 and minus 15, 105 it is given. millivolt. It is the input, it is given. 100 millivolt and output is required. 100 millivolt output is required, guys. What is the voltage gain of the circuit is required, not the output. Voltage gain. No doubt it is 100 millivolt it is given, but it is written 100 voltage gain of the circuit. Okay.
Now, what? How we are going to find the gain? First, we have the direct solution for that. Okay, I will give you the shortcut. Then, how we are going to find this? RF and R1, if it is given, it is an inverting operational amplifier. For inverting operational amplifier, V0 by Vs gain. This is called the closed loop gain. Is given by minus RF by R1 into AV beta upon 1 plus AV beta. What is the AV? Open loop gain. What is the beta? R1 upon R1 plus RF. R1 upon R1 plus RF. If suppose this AV beta is very greater than 1, means if it is an ideal operational amplifier, then you can neglect 1. This is cancel out. And what is the approximate gain? Minus RF by R1. Minus RF by R1. That is called what? Ideal gain. Under ideal operational amplifier. So first of all, always calculate the ideal gain. Minus RF by R1. That is 100 by what? 5. So what is the answer? Minus 20. Now, my dear friend, remember, answer will be always less than that. Why? Because it is an overestimated value. Always remember, we are neglecting 1. And that's why we are reducing the denominator. So what about the magnitude? Will be high. क्योंकि आप डिनोमिनेटर को छोटा कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? बढ़ जाएगा. तो इसीलिए आपका जो एवीएस है वो माइनस आर एफ बाई आर वन, ये ओवर एस्टिमेटेड वैल्यू, जो भी आंसर आएगा माइनस 20 से कम आएगा. अब चेक कर लो. अब यार ये देखो माइनस 20, ये नहीं हो सकता. दिस इज नॉट द आंसर. ये नहीं हो सकता. दैट इज नॉट द आंसर. अब इनमें से आप इतना भी कम नहीं है, 105 है, तो आप अगर यहां पे भी दोनों में से भी तुक्का लगाते तो ये आंसर विदाउट एनी एफर्ट, दिस इज द आंसर गाइस, राइट? और 50% चांस. अदरवाइज यू हैव द फॉर्मूला. नाउ व्हाट इज द बीटा हियर? R1 upon R1 plus RF, 5 upon 5 plus 100, 5 upon 105. Now directly use this formula. AVS minus 100 upon 5 into AV 105 into beta 5 upon 105 upon 1 plus 105. Open loop gain is given 5 upon 105. This is cancel out, this is cancel out, this is cancel out, this is cancel out. In numerator we have the 5, in denominator we have the 5 plus 1, 6. It will become minus 20 into 5 upon 6. That is 100 upon 6. This is nothing but what? Minus 16.67. You will get the exact answer, minus 16.67 guys. So yeah, minus 16.67. Okay, minus 16.67. But suppose you have no idea about the formula, then how we can solve? Because it is not possible. In my class already I have derived, I have solved around more than 10 questions on that diagram. This is the formula. But if you are not familiar with this formula, then how we can solve this question? If you are not familiar with this formula, then how we can solve this question? Right? So this is the case. Okay. So, okay, now answer, approximately answer. Now, next method. Suppose we are not having the formula, then remember this is VI, okay, and that is multiplied with the AV and you will get the output. So VI is what? VP minus VN. Always remember what is the VI. If you are going to use the AV into VI, output is equal to AV into VI, or you are going to put the positive value 105, so you can put the VP minus VN. So what is the value of the VP? 0. Now what is the value of the VN? Because it is a practical operational amplifier, this is nothing but VN. Don't apply the virtual short concept. VP and VN are not equal. Now write down the KCL at this point. VN minus VI upon 5 plus Vn minus V0 upon 100, Vn minus V0 upon 100 is equal to 0. Take the 100 as a LCM, it will become 20 Vn minus 20 Vi plus Vn minus V0 is equal to 0.
Then you can find the Vn, 21 Vn is equal to 20 Vi plus V0. What is the Vn is equal to 20 by 21 into Vi plus V0 upon 21. Okay, this is the value of the Vn with the help of the KCL at this point. Because what is the current enter into the op-amp? 0. Now you have the value of the Vn, you have the value of Vp. What is the Vp? 0. Vn is that one. Put in equation number 1. Now finally, Vp and Vn. देखो ये भी है एक method. If you have no idea about the formula, directly you can apply. Now what is the V0 is equal to, this is 0, so it will become minus 105 into the value of the Vn. 20 by 21 Vi plus V0 upon 21 multiply minus, this is the 5 into 100 Vi plus minus 5 V0. That will become 6 V0 is equal to minus 100 Vi. So what is the V0 upon Vi, guys? Minus 100 by 6. That is minus 16.61. Any formula required? No, not formula is not required. Very simple method, Vp minus Vn. Very, very simple method, Vp minus Vn. Directly you can solve, and answer will be minus 16.67. Remember, this is a very, very important one. Very, very important one, guys. Okay then. अब आते हैं next question पे. Next. So this is about, I think, yes, we have one more question here. This is the analog. Okay. Next question is, then consider the circuit shown. Assume that the diode D is ideal. Again, similar type of question already we have solved. Okay, no problem. Consider 16.61, that is the answer for previous question. Consider the circuit shown. Assume that the diode D is ideal. 100 sine 2 pi 50t. Again, always calculate the frequencies here. What 2 pi 50? That is nothing but 2 pi f, means what is the f? 50 hertz. It is the frequency of the signal. R is given 10 ohm. DC supply is given 50 volt. Vs is given as 100 sine of 2 pi 50t. It is written here. VDC is 50 volt. R is the 10 ohm. The average value of the current through the diode is. What is the average value of the current? Average means DC value we have to calculate, guys. So what is the formula for the DC value of the current? 1 by 2 pi, that is the total period, right? 0 to 2 pi, right? IT dt. IT d omega t. We have to integrate, right? So first of all, we will find the IT, equation for the IT, and then we will integrate, right? And then you can find the average value rounded off to 2 decimal places, guys. तो चलिए solve करते हैं इस question को. This is a very important one. So this is given as the diode, one resistor, 150 volt battery it is connected. Then this is the input, sinusoidal input is connected here. Value, what is the value given? 100 sine of omega t. Omega t, omega is 2 pi 50. Value of the R is 10 ohm. Average value of the current it is required when the diode is on during the positive half. Right, always remember there is a draw the diagram for sinusoidal signal. What is the highest value? 100. This is the 0. But the 50 volt battery is connected. So when the input is greater than 50 volt, then the diode will on. So there is a break point. When the diode is what? 50 volt. When the input is greater than the 50 volt, then the diode will be on. And when the diode is on, there will be the current. So what about the current here?
current will exist for this point to this point only. Okay, current will exist for this point to this point only. Right. Now, this is the conduction angle we can say for diode. Now, what will be the current then? In that case, the current when the diode is on, the current is nothing but when Vi is greater than 50. When the diode is on, it is ideal diode, it will act as short circuit. The current is given by Vi minus 50 upon what R? Vi minus 50 upon R. That is the value of the current, and it will exist from this point to this point only. Can you find this angle theta? Yes, we can find this angle theta, guys, so that we can get the range from this point to this point. What is the value of this? Theta 1 to theta 2. Theta 1 to theta 2. So theta 1 is nothing but theta, and theta 2 is nothing but 180 minus theta, pi minus theta. Pi minus theta. So what is the theta? So this signal is actually Vm sin omega t. So it will become 100 sine of theta. Now in place of omega t, you can put the theta is equal to what? 50. So this will become theta is equal to sine inverse of 50 by 100, that is 1 by 2, that is nothing but 30 degree. 30 degree. So what is the theta here? 30 degree. What is the theta here? 30 degree. So this is the 30, this is the 180 minus 30 means what? 150, or what is the 150? 5 pi by 6. You can, this is the angle, this is the 180. 180 minus 30. To convert it into radian, guys. Convert it into what? Radian. So this is the pi minus theta. So if it is 30 degree means it is equivalent to what? Pi by 6. So this theta 1 is the pi by 6. What is the theta 2? Theta 2 will become pi minus pi by 6. That is nothing but 5 pi by 6. The current will exist from pi by 6 to what? 5 pi by 6. Now we have the formula, and what is the equation for the current? This is the equation for the current. Integrate it. When I am going to integrate it, now I have the range. Because in negative half the current will be 0, guys, because the diode will be off. So it will be on for Vi greater than that. So average value of the current, or DC value of the current, it is given by integrate it 1 by 2 pi integral pi by 6 to 5 pi by 6 in radian. This is the value Vi. What is the Vi? 100 sine of omega t. This is the 100 sine of omega t minus upon 10 minus 50 upon 10 into what? D omega t. Yes, now we have to integrate. We have got the range. Then IDC or I average, it is given by 1 by 2 pi total period. Right? What is the integration of this? Is the 10 sine of omega t. You can take the 10 as a common. What is the integration of that? Cos of omega t upon, this is the cos of omega, because it is integrating with respect to what? Omega t. That's why this is the cos of omega t. No need to take the omega common. No need to take the omega common. With minus sign, what is the limit here? Pi by 6 to 5 pi by 6 minus 5 theta, because omega t is nothing but theta. What is the unit here? Pi by 6 to what? 5 pi by 6, and that is the limit. Or this is also, this is the 10 divided by this is the 5, and this is the value of this integration. Now 1 by 2 pi, here you will get 10. What is the value here? Minus cos of omega t, 5 pi by 6. 5 pi by 6 is nothing but 150. So what is the cos of 150? Remember, in calculator convert it into degree, otherwise convert the radian. Okay,
This is nothing but 0.866 minus it will become plus minus 0.866 root 3 by 2. It will cancel out. This term will become 0 minus 5 pi by 6 upon pi by 6. This term will become 0. It will become 1 by 2 pi into 5 into 4 pi by 6. Check my calculation. 4 pi by 6. This pi is cancelled. 5 into 4, 20. 20 by 12. That is nothing but 5 by 3. 5 by 3. I think 5 by 3. What is the 5 by 3? Okay, please check my calculation, guys. Just I am going to check the answer. कोई missing तो नहीं है. This is the question number. This is the question number 61. Okay, 61. VDC is given as 50 volt. Yes. Okay. Now, 1 minute. No. The limit. Already I have solved that question. Don't worry. अगर calculation mistake है तो we can work on it. That. Okay. 5 minus 1, 4. 5 is multiplied 1 by 2 pi. This pi is cancelled. 5 into 4, 20 divided by 6. 30 degree. 10 sine of omega t, 10 cos of omega t. 1 minute, guys. Given Vs is equal to 100 sine of 250. Average value round off to 2 decimal places. Okay, everything is fine now. Calculation is there is a problem of the calculation, I think. Input, what is the input is given? 100 sine, no? Okay. So what will be the current? 100 sine of omega t plus 50. Okay, no problem. Right. 100 sine of omega t minus 50 upon 10. 1 minute, I will check what is the cos 30. $866. एक बार और इसको प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं कि यहाँ पर क्या मिस्टेक है. चेक कर लेते हैं जरा. हो सकता है यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो. ओके, नो प्रॉब्लम. देखिए जरा, अगर मैं लिमिट रखता हूँ 1 by 2 पाई, इसको माइनस को बाहर ले लें, हो जाएगा -10 cos of 150. अगर इसको इफ इट आई कन्वर्टेड इनटू डिग्री, माइनस cos of 30. ओहो, ऐड हो रहे हैं यहाँ तो. -5 of 5 pi by 6. 5 pi by 6 minus pi by 6. That is also negative, guys. Now 1 by 2 pi minus 10. This is nothing but root 3 by 2.
फिर माइनस साइन, माइनस रूट 3 बाई 2, दिस इज ऑल्सो रूट 3 बाई 2, माइनस 5 इंटू 4 पाई बाई 6, 5 by 6, and that is the common, guys. That is the common. Now you can calculate. This is minus minus, it will become plus 1 by 2 pi, minus minus it will become plus, this will become 5 root 3. No, this is the 2 cancel, 10 root 3 minus, this is what, 20 pi by 6. Now you can use the calculator. 20 into shift pi divided by 6, one minute, 20 into pi divided by 6 minus 17.3, 6.28 divided by 2 divided by shift pi 1.086, 1.086, guys, you will get the answer. This is the average value. Oh, that is the calculation mistake, guys. Very simple. Already conceptually it is correct. So theta, how to find? An answer given in the question is 1.04 to 1.414. Just I have checked 1.04 to 1.14. This is the range, 1.04 to 1.14. Yes. And what is our answer? 1.086, in between. Bilkul sahi. So that is the how we can calculate the average values, guys. How we can calculate the average value for this question. So hope you can understand this. These are the questions from what analog. So up to this point, and thank you for watching this session, guys. So try to solve all the questions, and if you want to join, already we have started the courses for what, GATE 2027 and GATE 2028. ये तो बहुत ही उसमें बताया गया है टाइम लिमिट में, लेकिन बहुत डिटेल में डिस्कशन होता है ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से बना सके. थैंक यू फॉर वाचिंग द सेशन, गाइस. थैंक यू. तो देयर इज अ वन क्वेश्चन फ्रॉम द एनालॉग, गाइस. और एनालॉग वी हैव द MOSFET, and one word is written here, what? MOSFET switch shown in the figure. Which of the following is the correct option for Boolean logical expression of the output and maximum possible power? When the Boolean logical expression means what, we can say it is what, digital. But in a digital there is no logic family. So we may consider it from what, analog or what, digital, both. Okay, MOSFET means what, analog. Now what is given? Which of the following is the correct option for the Boolean logical expression of the output, the maximum possible power consumed by the circuit, and maximum power? We have to calculate the maximum power also. Now first of all, watch the diagram carefully, guys. What is the in the diagram? First of all, what is the diagram, guys? One resistor is connected, one MOSFET, another MOSFET. This is the one path here. This is the input, this is the input, guys. So what is the inputs here? A and B. Here 5 kilo ohm resistor. This is the battery is given as 5 volt. It is given. Now here there is another path. One resistor. This is connected here. This is the C input. Now there is another MOSFET here in between. There is another MOSFET. It is connected to the output. Here we are taking the output. This is connected to ground. And this is connected here, guys. Okay. This is the 10 kilo ohm resistor. This is what 5 volt battery is given. Maximum power we have to consider. Now, here we are getting the output, guys. Here we are getting the output. Now try to understand. If you want the output, guys, if you want the output 1, then out of these two, one MOSFET should be off. Either this off or this off or both off. This off or what, both off. Or how is it possible to make it what, off? A bar. If suppose I am giving the A bar, that will remain what, off, or this may be off. So it is an or option to B bar.
Either A off or what? B off. A bar plus B bar, that is nothing but AB bar. AB the whole bar. This is nothing but NAND gate, guys. Okay, NAND gate. Or you can verify it. Suppose 0 0 0 1 1 0 1 1. There are two MOSFET, MOSFET 1, MOSFET 2. When 0 0 both off, output will be 1. Just I am considering these two gate. Off on, output will be 1. On off, output will be 1. When both are on, then output will be what? 0. Because when both are on, this is connected to ground and output will be 0. So we don't want this. It is what? A, B, the whole bar. This is called NAND gate. So it behaves like what? NAND gate. Now one gate is connected in parallel. We want, if you want the output high, this should remain off. Otherwise, suppose both the are off, or one is off, one is on. Again, if it is short circuited, output will be 0. So it is a parallel operation. So this gate should be off if you want the output. If this gate should be off, the voltage at this point what should be? 0. Because when it is 0, then it will remain off. And if you want the voltage at this 0, this should be on. So when it will be on? When the C is what? 1, high. So C should be high, then this is on, this is the voltage is 0, this diode is off, and then you will get the output what? 1. And that's why it is a function will become, out of these two, one gate should be off or both the gates should be off, into what? Condition, compulsory condition C. C should be equal to 1 so that it will be 0 and this diode will remain, this MOSFET will remain off. So or this is the answer, or you can write A bar plus B bar into what? C. Now watch which Boolean algebra, which Boolean logic. Now we have the answer, yes or no. Yes, A, B the bar into C. This is the answer, D. Only one option we have, or you have to arrange this, because bar C. Now we can calculate the power, because we are having a different power, right? 46, I think it is the MCQ question, not the MSQ question. This is the MCQ question, guys. Okay, so I will check. This is the 46, it is given MCQ, guys. It is a 2 marks, negative marking. Okay, now how we can calculate the maximum power and the maximum power possible? Maximum power possible when, watch this diagram carefully. When there is a maximum current here, there will be the current. When there is a current, C is 1. So this is on, this current will flow like this. What is the current enter into the MOSFET? It is 0. Because it is a gate terminal, current 0. The same current will flow and there will be the maximum current I. At the same time, it is 1, then it is on. It is 1, then it is on. Now there will be the current through this path, guys. There will be the current through this path. I. Okay, now my dear friend, if this is on, what is the voltage at this point? 0. If this is also on, then again the voltage at this point will be 0. So what is the current given by the battery? Whether it is on or off, the current given by this battery for this path is what? I is equal to 5 minus 0. This is the 5 minus 0 upon 5. So what is the current? 1 milliampere. Similarly, when this is off, when this is on, what is the current through this path? This is the I1. So what is the I2? I2 is equal to 5 minus 0. When it is on, it will become 0 upon 10. 0.5 milliampere, guys. 0.5 milliampere. Okay, try to understand. Suppose it is 0, then it is high, then this MOSFET is on. So again the voltage at this point will be 0. What is the current given by the battery? Only 5. And in that case, I2 will be what? 0. Because when it is off, it is on. What is the current here? 0. So I2 will become 0. So what is the worst condition? When there is a I2, when there is a I1, then there will be the maximum current given by the battery. So what is the total current given by the battery? I1 plus I2. That will become 1.5 milliampere.
what is the power given by the battery? V into I. So 5 value of the battery into current 1.5, so this will become 7.5 milliwatt. Maximum power delivered is 7.5 milliwatt. Again कुछ भी doubt हो सकता है तो मैं फिर से बता दूं. There is another case. This is on, then there will be the current. For example, you are assuming, let's sir, I am assuming that this is off, that this is 0, then this is off. Now this will become on because there is a high voltage. And what is the current? It will become 0 because what is the current enter into the gate terminal? 0. It is off. So what is the total current? 0. And now it is on. What is the voltage at this point? 0. There will be only the I1 current 5 by 5. That is 1 milliampere only. My less current. That's why the less power delivered by the battery. So maximum power delivered when these two are on. This is off. This is on. We are getting 7.5 milliwatt. And that's why the answer for this question is D for Delhi. Okay, this is the answer. D for Delhi. So guys, this is the question for the analog, right? ऐसे हमने पूरे solve कर लिए. So thank you for watching the session, guys. Thank you very much. Already I have discussed all the questions from analog in electrical branch, guys. Okay. And thank you. Hey everyone, so let's continue our discussion on network analysis from the electrical engineering question paper. So there are very good number of questions from network analysis, around 8 questions. 1-2 questions ऐसा होता है just like a overlap. वो questions analog का भी हो सकते हैं, power electronics का भी हो सकते हैं, हम network concepts पे भी we can solve it. जैसा we have 8 questions. So let us see the first question. The circuit shown in the figure, the elements are is shown. Which of the following option correctly identifies the linear elements? What are the linear elements? Linear elements, resistor, inductor, capacitor. Diode is a non-linear element. First question is very simple. Okay. Second question. If you see, we need to find the Thevenin's equivalent VTH and RTH. So here, generally, we open circuit it when you need response in this branch. But here we are finding, examiners said Thevenin's between YZ means maybe we may be connecting the load between YZ. In that case, you should not remove the resistor. If you need response in this resistor, you may be needing to remove this resistor. But he has shown polarity inside, maybe we need to remove it. It depends on the question, you understand. While he asked the Thevenin's between Y and Z, suppose he want to find the response in 10K, then we should remove it. He want to connect something across Y and Z, and for remaining part he want to find the Thevenin's, then we should not remove the 10K. Luckily, because in this particular question, whether you consider or remove it, both the cases you will be getting the answer. But concept I want to make it clear. So this is 20, 10K, and here 100 volts. I'm just redrawing the circuit. 2K, 10K, and this is negative 20 volts and 1K. Okay, between Y and Z he has given. Because he has taken polarity inside, I'm assuming maybe he wants response inside. So we can open circuit it. In fact, whether you open circuit it or not, both the cases your answer is same. But as I told you, because the polarity are given, I am assuming the response is required here. If polarities are not given, generally, unless we require response in this branch, we should not remove it. Okay. Here, so what is VTH? Sir, what is VTH is? This is 20 and 100. Node voltage is 100, right? And here 20 है 120. ये तो -20. So ये नेग्लेक्ट कर लो और कनेक्ट करो. कोई भी केस में आपका VTH क्या होता है? नो वोल्टेज तो सेम होता है ना वोल्टेज सोर्स का. 120 minus -20 will give you 140. So 140 is my VTH. RTH के लिए वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर लो. And you will have resistor, and again voltage source को short कर लो. Resistor can be anything short, you can neglect it or not. So here also you can see this is the 1K. So here you need to find RTH. Assume this 10K.
You can remove it. In any case, it is like this. Because 0 parallel with anything is 0, parallel with anything is 0, parallel with anything is 0, 0 parallel with anything is 0. So if you have even this 10K is there, even this 10K is present or removed. In any case, my RTH is equal to 0. So मेरा आंसर क्या होता है 140, 0. ऑप्शन बी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. So ये वाला क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है. I mean conceptual question. You can see, refer the four circuit. It is a very basic violation of KCL, KVL conditions. Which of the following options K1, K2, K3, K4 makes all of them realizable? You can see here VD equal to, when they are in parallel, to satisfy KVL, they must be equal. So my Vx must be equal to VD. So K1 must be equal to 1 compulsory. If you have current source and voltage source parallel, they can be any value. Similarly, if you have voltage source, current source value, they can be any value. So K2, K3 can be any value. But here, two current sources are in parallel. The current entering should be equal to current leaving. So this should be equal to minus AD by KCL. Otherwise, the KCL will be violated. So my K4 must be equal to minus 1 by 3. So K1 should be equal to 1, K4 equal to minus 1 by 3. Baki K2, K3 can be any value. So K1 should be 1, K4 minus 1 by 3, K2, K3 can be any values. K2 to K3 can be any values. Next question. This is a power electronics question and network analysis का question भी है. So because signal का अंदर harmonics. So मेरे पास एक single phase voltage source Vs which is equal to how much it is 325 sine omega t. Omega can be anything to that word. Similarly, it is here sine 50t, right? I equal to 12 sine omega t plus 9 sine, here 150. So 3 times 3 omega t. Harmonic is present. So firstly, what is the source? VRMS. Vs RMS is equal to 325 by √2. कैलकुलेट करना तो कर लो ना, नहीं तो बाद में कैंसिल कर सकते. What is IRMS? Root of sum of individual RMS whole square. 12 by √2 plus 9 by √2. Here if you observe, there is no angular difference between them. So cos phi is equal to fundamental angle between them is equal to 0. So what is the fundamental power here? Is equal VRMS, that is 325 by √2 into IRMS of the fundamental signal, that is 12 by √2. Cos of angle between them is 0. Cos 0 is 1. Fundamental only should be considered. But what is the apparent power? Apparent power is equal to VRMS 325 by √2 into IRMS. What is IRMS here? Can I take like this? 15 by √2, because 144 plus 81 will 225. Its root is equal to 50. So it is 15 by √2. So I am not taking √2 calculations because anyway they will cancel out. So what is your examiner question here? Load power factor. Power factor is equal to active power taken by the load by apparent power supplied by the source. So P by S, √2 cancels, that it both of them cancels, 12 by 15, which will give me 4 by 5, 0.8. So it will be equal to 0.8. ऐसा मत चेक करना, ये भी cos phi, ये भी कोई एंगल नहीं, वन गलत है. Be careful. Okay. Harmonics are given. This is the procedure you need to follow. How I applied the RMS is because omegas are not equal. We can apply the formula sum of squares of individual RMS to root. Next question. So this is a question kind of transient question. It will take time, but options eliminate. You can do it with less amount of time also. So let's do it. So the electrical network shown as an independent voltage source of 10 volts
and current source of U of t. U of t means a step signal like this. Okay. So can you tell me first t equal to 0 minus current source U of t will apply at 0. इसके पहले क्या? मेरा पास एक 10 volt source, एक 25k capacitor will be open circuit because 10 volts is present in the network for a long time. मेरा network क्या होता है? Steady. And this is 100k. Capacitor acts as a open circuit. Now, what is my Vc of 0 minus or V0 is equal to, here by voltage division principle, this is 8 and 2. Vc of 0 minus equal to Vc of 0 plus equal to V0 equal to 8. So Vc of 0 minus equal to 8, it is equal to Vc of 0 plus. Now, can you draw the circuit at infinity? At time t equal to infinity, this will be like this. 10, 25k and current source of 1 milliampere is added. Okay. And again, capacitor acts like a open circuit because at time t equal to infinity, steady state. 100k. Okay. You can apply here source transformation, which will make my analysis easier. 100k into 1, and this will be 25k, 10 volts, and this is my capacitor, open circuited. So 100 minus 10 is 90. 90 by this current will be 100 minus 10. 90 upon 125. Okay. And if you multiply them, what is the drop? You will get 90 by 5. 90 by 5 is how much? 89. Okay, because I just multiply these two things, I'll get 18. So what is my Vc of infinity? 18 plus 10, 28. So you can see the options. Vc of infinity is 28 and this is 0 only here. Sir, why can't you find it at 0.5? I can find it. See here for this network. I know initial value, final value. Find the time constant of the network for t greater than equal to 0. Current source you can neglect it to open circuit. Voltage source short circuit. What is R equivalent? 25k parallel with 100k. You can write this as 100k by 4, 100k by 1, 100k by 5, 20k. C equivalent is 10 microfarad, 10 power minus 5. So tau is equal to, multiply both of them, you get 10 power minus 2, 20, 10 power minus 5. Two by 10, 1 by 5. Okay, 0.2. Right. What is Vc of t? Formula. Final value is how much? 28 plus initial value minus final value t power minus t by tau. Examiner want at t equal to 0.5, which is 2.5 times tau. Substitute here t equal to this much, you get that 26.36 whatever. Okay, just substitute t equal to what is your tau? Tau is 0.2. Substitute t equal to 0.5. 0.5 by 0.2 will give 2.5. That will, you'll get the final answer. Instead of this calculation, just find initial final, that is sufficient. So next question. So it is again a question from Thevenin's and Norton's kind of question. So in the terminal network shown in the figure, in the terminal voltage and current. See, in these kind of questions, voltage and current directions are very important. You see here, this is my Vt and It. Directions like this, X and Y. You want to convert this into Norton's equivalent, IN, RN. Okay.
Now the terminal voltage of the linear network is like this, and I want to convert like this. Now examiner is saying that suppose he applied 8 here, he got minus 0.5, 30, 0.5, 36, 1. But generally, for the network, if you want to know VTH, RTH, or IN, RN, two unknowns, two equations are sufficient. He has given three to confuse you because he has not specified as linear, non-reciprocal, or something. So just see here. For my convenience, I'm taking Thevenin's here, VTH and RTH of the network. Now, terminal voltage is 18. Just apply here 18 volts, and the current will be in this direction minus 0.5. So, what does it mean? Here it will be 0.5. So, VTH equal to 0.5 RTH plus 18 will be the 1 point. What is the second case? Let us take the VTH, RTH, and as per the second case, he has connected 30 volts here, and he got 0.5 in the other direction. So 30 will be equal to 0.5 RTH plus VTH equation. Okay, so solve 1, 2, you get VTH equal to 24, RTH equal to 6. 6 into, RTH equal to 12. 12 into 0.5 is 6 plus 8, 24. Same way. 24 plus 630. Now, examiner also asked Norton's current, voltage by VTH by RTH, that is VTH by RTH, that is 2. So, you can see here, IN will be 2, RN will be 1. Reverse also given, be careful. Okay. IN is 2 and RN will be 12. So, this is a very simple straight away question. Examiner is asking, what is the value of RL for maximum power transfer? What do? Just connect this here, replace the source with a short circuit, and from here find RTH and must be made equal to RL. This is the required condition for maximum power transfer. So what is RTH if you short circuit? It is 0 from this side, 4 parallel with 10. That is 40 by 14, 20 by 7. What is 20 by 7? Let me apply again. 2.857. Okay. So that is the value of RL required for maximum power transfer. No mark question. Yeah. Okay. Chalo. Last question from network analysis. Consider the network shown in the figure. Assume the diode is ideal. Okay. And now resistor is given. DC voltage is applied. Input is some 100 sine omega t, whatever it is of omega. Given. What is the VDC is given? Resistance is given. Average value of current through the diode. Average value is area over one time period by time period. So firstly, what you know here, diode will be on when Vs is greater than 50, diode will be on. Okay, so if you plot the sinusoidal waveform, so this is maximum value of 100 and this should be 50. So sin theta will be 0.5 by using this when theta is equal to or pi by. This will be 5 by 6, 30 degrees now. Pi by 6. So if you take this as pi, 2 pi, this will be again because of the symmetry, this part will also be pi by 6. So this should be pi minus pi by 6, 5 pi by 6. So you can see here, during this period only, my input is more than DC. Diode will be on. Remaining time, diode will be off. When diode is on, what is your current in the resistor? What is the current in the resistor is equal to
when diode is on, current in the resistor will be equal to source voltage Vs minus the DC voltage 50 by resistance. Okay, I will write like this. When Vs is less than 50, definitely diode will be on. So during this period, my diode is getting on. So उस समय पे मेरा average value क्या होता है? So average value के लिए, what is the time period it is going to? If you take here omega t, sin omega t or theta into consideration 2 pi. Okay. So I can write 1 by 2 pi integration of from when to when it is getting on pi by 6 to 5 pi by 6. What is its value? Vs by 10 minus 50 by 10 is how much? 5. I take 1 by 2 pi. So d omega t. Okay, sin omega t into d omega t. I am taking into that format or sin theta d theta per plus बाकी समय पे क्या 0 में. So it will be like this. 1 by 2 pi. Okay. Integration of 5 by 6 to 5 pi by 6. You can take 1 by 10 other side also. Otherwise, Vs is how much? 100. 100 by 10 is 10 sin omega t to d omega minus what is the integration of constant? That will be five, right? 5 theta, 5 into omega t, where omega t is varied from pi by 6 to 5 pi by 6. So I can directly take, I'm directly finding this integration here. Minus pi by 6, 5 pi by 6 to pi by 6 will be 4 pi by 6. 4 pi by 6 is 2 pi by 3. Okay. I have already calculated this relation. So just shift this here 5 omega into d omega t, which its range is from here to here. Okay. So now for sin theta d theta you take, it is your convenience. Now what do you get here? 1 by 2 pi you can keep it outside. So integration of this will be minus 10 cos omega t from pi by 6 to 5 pi by 6 minus 2 pi cancels, you get 5 by 3. We'll take that 5 by 3 later. Now 1 by 2 pi minus 10 into here cos 5 pi by 6 cos 5 pi by 6 minus of minus plus cos pi by 6 into plus minus pi by 2. So this will give me root 3. This will be minus root 3 by 2. Minus 10 is common here for that calculation. So this will be minus root 3 by 2. This will be minus of minus will give you 1 minute. Sorry. Here also you get 10. No. So this will be 1 by 2 pi minus 10 into root 3 by 2 and plus minus root 3 by 2 and plus root 3 by 2 will give you 10 times root 3. 10 times root 3 minus 5. Okay. So that calculation we can do. Let me calculate.
1.756 minus what is pi by 3? 1.666. So you get 1.09. That will be your answer. Okay. So omega is this much. So I am writing directly as sine omega. If you take it into time domain, it will take more time unnecessarily. So one thing you should remember, sine pi by 6 equal to 1 by 2. This is the concept, right? Because it should reach 100 by 250 value because of the DC. That's it. So that is about the questions from network analysis. Total good number of questions, 8 questions are given. So let me solve a question from digital circuits, electrical question paper. There are only 2 questions. One question is common for analog circuits also. So it will be solved in analog circuits. That is because of the NOR gate question. And this one is from very basics of the digital circuits. So let's try to solve this one. Here, X, Y, Z, the NOR operation are done. So let me increase the size so that it will be more visible. But so here X, Y, Z. So this will give you X plus Y plus Z whole bar. Generally, if you have more bubbles, we can send it back and cancel. That is not possible. X bar, Y bar, Z bar by default comes. And here not operation for X will give you X bar, and this is Y, this is Z. So X bar Y, X bar Z. So X bar Y plus X bar Z. Now end operation means multiply them. X bar Y plus X bar Z into X bar Y bar Z bar. Because you have here Y and Y bar multiplication medium change. Here you have Z bar multiplication medium change. So the output will be permanently zero. So that is about the question. Only hardly one question is given from digital circuits anyway. So this is the answer. And another question is given that is already solved in analog circuits. That is a CMOS logic gate, NOR gate is given. Okay. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस सेशन में और हम बात करने वाले हैं गेट 2026 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आए हुए क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस के बारे में। मैं दोस्तों डिस्कस करूंगा आपसे 2 सब्जेक्ट, दैट इज पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जो पहला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। जो रेस्पॉन्स शीट है मेरे पास उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 17 ओके, दिस वन। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है A 15 kVA 1100/220 volts single phase 2 winding transformer is configured as a 1.32 kV is to 1.1 kV ऑटो ट्रांसफॉर्मर, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी रेटिंग क्या होगी। ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाने के बाद इसकी रेटिंग क्या होगी। तो सबसे पहले जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है उसकी रेटिंग देखते हैं क्या है, वोल्टेज की रेटिंग क्या दी हुई है। और इसी के किसी कनेक्शन के थ्रू हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर को बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये दिया है 1100/220, तो इधर हो जाएगा 1100 और इधर हो जाएगा 220। और इसकी जो रेटिंग दी हुई है दैट इज 15 kVA
15 kVA। तो इसको हम आई हाई वोल्टेज साइड कह सकते हैं, क्योंकि इस 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए जो हाई वोल्टेज साइड है वो क्या है, 1100 kV। और यहां पर हम करंट फॉर द लो वोल्टेज साइड, करंट फॉर द लो वोल्टेज साइड। तो अगर रेटिंग पता है आपको तो आप हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड की करंट निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगी करंट? इट इज 15 kVA डिवाइडेड बाई 1100, और ये हो जाएगा 15 kVA डिवाइडेड बाई 220। इसको जरा निकाल के देखो जरा करंट की क्या वैल्यू आ रही है। तो आई थिंक 1100 वोल्ट के आसपास आ जाएगा आपका 13.636 एम्पियर, और 220 वोल्ट के साइड पर आपकी करंट आ जाएगी 66.182। इसको आप कैलकुलेट कर लेके कंफर्म कर लेना, 182 एम्पियर्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब मुझे जो ऑटो ट्रांसफार्मर चाहिए है उसकी जो रेटिंग है वो है 1.32, जिसको मैं लिख सकता हूं 1320 ऑब्लिक 1.1, यानी 1.1 मतलब 1100 वोल्ट। अब ध्यान से देखो, जो मेरे पास 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है इसकी हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग्स को मैं किस तरीके से कनेक्ट करूं कि मुझे ऑटो ट्रांसफार्मर पे ये वोल्टेज का टर्मिनल मिल जाए। तो अगर आप देखोगे तो 1100 और 220 इसको अगर आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 1.32 या 1320 kV। तो यानी कि जो हाई वोल्टेज साइड है उसमें हमें दोनों वाइंडिंग को सीरीज में ऐड करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके का कनेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये सपोज हो गया, और हमें आउटपुट पे कितना चाहिए, आउटपुट पे चाहिए 1100। ठीक है, तो सपोज ये हो गया 1100 और ये हो गया 220 वोल्ट्स। ठीक है, और ये हो गया आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन। यहां पर जो टोटल वोल्टेज आपको मिल रहा है वो मिल जाएगा 1320 वोल्ट, और यहां पर जो वोल्टेज आपको चाहिए वो है 1100 वोल्ट्स। अगर हम करंट की बात करें तो यहां पर कौन सी करंट होगी, यहां पर जो करंट होगी वो 220 वोल्ट्स वाली वाइंडिंग की करंट होगी। 220 वोल्ट्स वाली वाइंडिंग की करंट क्या है, दैट इज लो वोल्टेज साइड करंट, दिस इज 66.182, इट इज 66.182। और 1100 वोल्ट्स वाले में इसमें कितनी करंट आ रही है, 1100 वाले में आ रही है 13.636, 636 दोनों को आप ऐड करोगे तो यहां पर जो टोटल करंट आ जाएगी लो वोल्टेज साइड की वो कितनी आ जाएगी, इसको जरा ऐड करके बताओ। इसको ऐड कर सकते हैं आप, कितनी आ जाएगी 66.182, और इसमें हमें ऐड करना है 13.636। ऐड करो जरा, 6 2 8, 8 3 11 के 1 हासिल लगे 1, 6 2 8, 6 3 9, 6 1 7, तो ये आ जाएगी 79.818। अब आप चाहो तो लो वोल्टेज साइड या हाई वोल्टेज साइड कहीं से भी इसकी केवीए निकाल सकते हो, या तो इस वोल्टेज इस करंट को मल्टीप्लाई कर दो या इस वोल्टेज और इस करंट को मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मुझे केवीए रेटिंग निकालनी है ऑटो ट्रांसफार्मर की तो क्या हो जाएगी, 1320 मल्टीप्लाइड बाई 66.182, या तो यहां से निकाल लो या 1100 को मल्टीप्लाई कर दो
यहां पर जो करंट आ रही है दैट इज 79.818, 79.818। दोनों को ही आप कैलकुलेट करोगे तो जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा 90 kVA, 90 kVA approximately. So this is the correct answer. This is the correct answer for this auto transformer question, question number 17. Next question क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर सिस्टम का, जिसमें न्यूटन डॉप्सन लोड फ्लो से रिलेटेड उसने आपसे मैट्रिक्स की डायमेंशन पूछी है कि जैकोबियन मैट्रिक्स का साइज क्या होगा। तो देखो दोस्तों, इसको कैसे करेंगे। जो जैकोबियन मैट्रिक्स का साइज है जो जैकोबियन मैट्रिक्स का साइज है दैट इज L and this is M and this is also L and this is also M. What is L? L is the number of P specified. And what is M? It is the number of Q specified. अब आपकी जो पीवी बसेस हैं उस पे P स्पेसिफाई है, यस और नो, और जो आपकी PQ बसेस हैं उस पे P भी स्पेसिफाइड है और Q भी स्पेसिफाइड है। तो मुझे L चाहिए नंबर ऑफ P स्पेसिफाइड, नंबर ऑफ P स्पेसिफाइड मतलब नंबर ऑफ PV बसेस प्लस नंबर ऑफ PQ बसेस। अब जरा क्वेश्चन में चल के देखते हैं कि PV और PQ बसेस के नंबर्स हैं क्या। ये कह रहा है कंसीडर अ पावर सिस्टम विद n बसेस, तो टोटल नंबर ऑफ बसेस कितनी है, टोटल नंबर ऑफ बसेस वो हो गई कैपिटल N। फिर ये कह रहा है इसमें से P बसेस आर जनरेटर बसेस, P बसेस आर जनरेटर बसेस, and the remaining Q are load buses, remaining Q are load buses, load buses। तो Q एक्चुअली है किसके बराबर, टोटल बसेस थी N, उसमें से आपने P को हटा दिया यानी कि PV जनरेटर बसेस को हटा दिया, जनरेटर बसेस को हटा दिया तो जो बची वो क्या है, वो लोड बस है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो नंबर ऑफ PV बसेस होंगी, नंबर ऑफ PV बसेस होंगी वो कितनी होंगी, P में से एक बस आपको हटानी पड़ेगी जो कि स्लैक बस की तरीके से काम करेगी, जो आपके सिस्टम के टोटल लॉसेस को एग्रीगेट करके सप्लाई करेगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ PV बसेस कितने हो गए, P-1, नंबर ऑफ PQ बसेस कितने हो गए, नंबर ऑफ PQ बसेस कितने हो गए, N-P। तो जरा इसको हम ऐड करें क्योंकि PV बसेस पे भी स्पेसिफाई है, PQ बसेस पे भी स्पेसिफाई है, तो ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ PV बसेस इट इज P-1, नंबर ऑफ PQ बसेस इज N-P, N-P। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा N-1, N-1। M कितना है भाई, M है नंबर ऑफ Q स्पेसिफाइड, Q कहां पर स्पेसिफाइड है, सिर्फ और सिर्फ PQ बस पे, तो PQ बस कितनी है, N-P, PQ बस कितनी है, N-P। तो जैकोबियन मैट्रिक्स की जो साइज है वो हो जाएगी L प्लस M क्रॉस L प्लस M। L प्लस M कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2N माइनस P माइनस 1 क्रॉस 2N माइनस P माइनस 1। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, B इज द करेक्ट आंसर, B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अगेन पावर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि ABC फेजेस के जो वोल्टेज हैं उसको इसने क्या किया है, डेल्टा थीटा एंगल से
रोटेट कर दिया है, मतलब तीनों ही फेजर्स को, ए बी और सी फेज के फेजर्स को डेल्टा थीटा एंगल से इसने रोटेट कर दिया है। ये पूछ रहा है कि जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है उसमें क्या चेंज आएगा, उसमें क्या चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो देखो जरा ध्यान से समझो इसको, कि जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है उसको आप कैसे लिख सकते हैं, ए फेज, बी फेज और सी फेज, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया केस 1, ये है केस 1। केस 2 की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, केस 2 की अगेन क्या हो जाएगा, 1/3। अब आपने VA को क्या किया है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज किया, उसको एक डेल्टा थीटा एंगल से आगे बढ़ा दिया, मान लेते हैं। तो इसका जो फेजर है उसमें डेल्टा थीटा एंगल का क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, प्लस VB डेल्टा थीटा प्लस VC एंगल डेल्टा थीटा। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1/3 VA और इसको लिख सकते हो e⁻j डेल्टा थीटा, VB e⁻, पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस VC e⁻j डेल्टा थीटा। अब इसमें से e⁻ j डेल्टा थीटा को आप कॉमन ले लो, तो क्या बचा, VA प्लस VB प्लस VC। और इसको अगर आप देखो तो इसका मैग्नीट्यूड वही है जो पहले वाले का मैग्नीट्यूड था, यानी मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन फेज एंगल में चेंज आया है। मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। मतलब जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जो है वोल्टेज का, डेल्टा थीटा से अगर हम हर एक एबीसी फेजर को आगे बढ़ा दें तो उसके मैग्नीट्यूड पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा, बट जो फेज एंगल है वो चेंज हो जाएगा। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स इन केस 1 2 हैव द सेम फेज एंगल, गलत गलत गलत। डी ऑप्शन कह रहा है जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट इन केस 1 एंड 2 हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट फेज एंगल, सो डी इज द करेक्ट वन। डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन का, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन है। देखो कह क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिंक्रोनस मोटर है जो 50 हर्ट्ज पे काम कर रहा है। एक सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है, इसको सप्लाई दी जा रही है 3 फेज की, और ये किस पे काम कर रहा है, 50 हर्ट्ज पे काम कर रहा है। ये क्या है, सिंक्रोनस मोटर। और ये सिंक्रोनस मोटर एक सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर से ये कनेक्टेड है, मैकेनिकली कपल्ड है, और ये जो पावर जनरेट कर रहा है ये भी 3 फेज है, बट इसकी जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है वो है 16.67 हर्ट्ज, 16.67 हर्ट्ज। अब ये आपसे पूछ रहा है कि मोटर के नंबर ऑफ पोल्स क्या होंगे, मान लेते हैं PM है, और जनरेटर के नंबर ऑफ पोल्स क्या होंगे, मान लेते हैं PG है, ठीक है। अब देखो एक बात तो तय है, चूंकि ये सिंक्रोनस मोटर इस जनरेटर से मैकेनिकली कपल्ड है, तो ये बात तो 100% तय है कि सिंक्रोनस मशीन है तो भैया सिंक्रोनस स्पीड पे ही ये रोटेट करेगी। अब सिंक्रोनस स्पीड को आप मोटर और जनरेटर के लिए कैसे लिख सकते हो, NS इज इक्वल टू 120 F मोटर अपॉन P मोटर, और जनरेटर के लिए कैसे लिख सकते हो, ये हो गई मोटर की, ये हो गई जनरेटर की, 120 F G अपॉन PG, और ये दोनों बराबर होने चाहिए, यानी कि FM अपॉन PM इज इक्वल टू FG अपॉन PG। मोटर की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, ये हो गया PM, और जनरेटर की फ्रीक्वेंसी है 16.67, ये हो गया PG, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो, तो मोटर के जो नंबर ऑफ पोल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे 3 टाइम्स नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द जनरेटर, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ जनरेटर। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अब यहां से देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर आपके पास
ये रिलेशन आ गया कि सिंक्रोनस मोटर के जो नंबर ऑफ पोल्स हैं वो सिंक्रोनस जनरेटर के नंबर ऑफ पोल्स के 3 टाइम्स हैं। तो अगर जनरेटर के नंबर ऑफ पोल्स 2 हैं तो मोटर के नंबर ऑफ पोल्स कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। क्या किसी ऑप्शन में दिया है 6 और 2? नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द मोटर एंड जनरेटर 6 और 2 दिया हुआ है, तो बी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी मशीन का है, पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द टिपिकल डबल स्क्विरल केज स्ट्रक्चर यूज्ड इन द इंडक्शन मोटर। अब जरा ध्यान से देखो, स्टार्टिंग करंट के बारे में पूछ रहा है। जो आपका डबल स्क्विरल केज रोटर है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये हो गया आपका आउटर केज और ये हो गया इनर केज। जो आउटर केज है उसका अगर आप एरिया देखोगे तो इसका जो एरिया है आउटर केज का वो कम होता है, और जो इनर केज है उसका जो एरिया होता है वो ज्यादा होता है। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें आउटर केज की तो ये हो जाएगा रो एल अपॉन ए आउटर। चूंकि ए आउटर बहुत कम है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। और अगर हम इनर रोटर के रेजिस्टेंस की बात करें तो रो एल अपॉन ए इनर केज, और चूंकि ये बहुत ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम होता है। अब देखो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि हमारा जो इंडक्शन मोटर है उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो स्टार्टिंग टॉर्क होता है नॉर्मली कम, और स्टार्टिंग टॉर्क कम ना हो जिससे कॉगिंग की क्रॉलिंग की प्रॉब्लम ना हो, तो हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क हाई हो। अब स्टार्टिंग टॉर्क हाई कैसे होगा? स्टार्टिंग टॉर्क हाई होने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। अगर मैं लिखूं R2 इज इक्वल टू एस एक्स टू नॉट, ये क्या हो गया? स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस, स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस, और ये क्या हो गया? पर फेज रोटर रेजिस्टेंस। अब अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो स्टार्टिंग के केस में स्लिप की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है। स्लिप की वैल्यू ऑलमोस्ट, सॉरी, स्लिप की वैल्यू क्या है? ns माइनस 0 अपॉन ns। तो स्लिप की वैल्यू है 1। स्लिप की वैल्यू क्या है? 1। स्टार्टिंग में बोलें तो स्लिप की वैल्यू है 1। स्लिप की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में आपको मैक्सिमम टॉर्क तब मिल सकता है जब रोटर का जो रेजिस्टेंस है वो उसके रिएक्टेंस के बराबर हो जाए। बट ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारा जो इंडक्शन मोटर है उसका जो रोटर है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है और उसका रिएक्टेंस बहुत ज्यादा है। तो हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि स्टार्टिंग के टाइम पर जो रोटर का रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है वो किसी तरीके से ज्यादा हो जाए, और जैसे ही रेटेड स्पीड पर हमारी मोटर पहुंचेगी तो फिर से रोटर का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब स्टार्टिंग होती है तो हमारी ज्यादातर जो करंट होती है वो आउटर केज से फ्लो होती है, और चूंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो जो रोटर का रेजिस्टेंस ऑफर होता है वो ज्यादा होता है, तो हमें टॉर्क ज्यादा मिल जाता है, स्टार्टिंग टॉर्क हमें ज्यादा मिल जाता है, बढ़िया टॉर्क मिल जाता है। बट जैसे ही रेटेड स्पीड पर मोटर पहुंचती है तो ज्यादातर करंट किससे फ्लो करती है? इनर केज से फ्लो करती है। तो अगर आप ऑप्शंस देखें तो डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हैं, एट स्टार्टिंग ए लार्जर पोर्शन ऑफ द रोटर करंट फ्लोज इन द आउटर केज। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी मशीन्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मशीन्स का है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक सिंक्रोनस जनरेटर है, इनफाइनाइट बस से कनेक्टेड है, और ये 50 मेगावाट पावर जो है सप्लाई कर रहा है यूनिटी पावर फैक्टर पे। यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब क्या हुआ? यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब ये हुआ कि ये अगर तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज है तो जो आर्मेचर करंट है वो इसी के डायरेक्शन में है, और अगर हम रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें, आर्मेचर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें और सिर्फ सिंक्रोनस रिएक्टेंस की बात करें तो इसके टर्मिनल वोल्टेज पे आपको IA का ड्रॉप मिल जाता है, और यहां से आपको क्या मिल जाता है? एक्साइटेशन EMF EF। बात समझ में आ रही है? अब देखो ये कह क्या रहा है
ये कह रहा है इफ द फील्ड एक्साइटेशन इज इंक्रीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली डिस्क्राइब्स इट्स इफेक्ट ऑन द स्टेटर करंट, मतलब हमें स्टेटर की करंट, पावर फैक्टर और लोड एंगल, इसके बारे में चर्चा करनी है। अब ध्यान से देखो जरा, एक्साइटेशन बढ़ाने का मतलब क्या है? एक्साइटेशन बढ़ाने का मतलब यह है कि अभी अगर आपका यूनिटी पावर फैक्टर पे एक्साइटेशन ये है, तो अब आपका नेक्स्ट जो एक्साइटेशन है वो कुछ ऐसा चला जाए, यस और नो? जो नेक्स्ट एक्साइटेशन है वो कुछ इस तरीके का हो जाए। और इस तरीके का एक्साइटेशन कब पॉसिबल है? जब आपके पास लैगिंग करंट हो। तो करंट आपकी कुछ हो जाए इस तरीके से, आई ए, कुछ लैगिंग करंट हो जाए। क्या हो जाए? कुछ लैगिंग करंट हो जाए। अब अगर आई ए ऐसी है तो इससे 90 डिग्री लेते हुए, तो अब जो आपको ड्रॉप मिलेगा वो आई ए डैश, इसको आई ए डैश बोल दो, एक्सेस कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो लोड एंगल क्या है। ये तो हो गया था पावर फैक्टर एंगल फाई। अब लोड एंगल देखना, पहले लोड एंगल था डेल 1, अब लोड एंगल क्या हो गया है? अब हो गया है डेल 2, और लोड एंगल क्या हो गया है? कम हो गया है। तो देखो लोड एंगल कम होगा, पावर फैक्टर कैसा हो जाएगा? लैगिंग हो जाएगा। और करंट की वैल्यू क्या हुई? करंट की वैल्यू बढ़ गई, तो जो स्टेटर करंट है वो भी बढ़ जाएगी। अब देख लो किस ऑप्शन में आपका आंसर मिल रहा है। स्टेटर करंट इंक्रीज, पावर फैक्टर बिकम्स लैगिंग एंड लोड एंगल डिक्रीजेस, लोड एंगल डिक्रीजेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है ये भी मशीन का है, ठीक है। और इसमें बेसिकली वो आपसे बात कर रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है जिसको इंडिया और यूएस में यूज किया जाता है अलग अलग वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी रेंज में, और वो आपसे उससे रिलेटेड उसका कुछ कंक्लूजन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन नंबर है 31। देखो ये क्वेश्चन है, तो ये कह रहा है कि अगर आप इंडिया की बात करो, ठीक है, तो एक 220/12 वोल्ट्स सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है और इसकी जो रेटिंग है वो है 100 वोल्ट एम्पियर और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। कह रहा है इसको यूएसए भेज दिया गया और अमेरिका जाने के बाद जो इसकी वोल्टेज रेटिंग है वो है 110/6 वोल्ट और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 60 हर्ट्ज। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नो लोड करंट यूएसए में और इंडिया में उसका क्या कंपैरिजन होगा, और साथ ही साथ ये एडी करंट लॉस के बारे में भी पूछ रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले समझो कि जो ट्रांसफार्मर की मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? V/F रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है कि नहीं। अब अगर मैं इंडिया वाले केस को कह दूं 1 और यूएसए वाले केस को कह दूं 2, और ध्यान से देखना मैं बोलूं BM1/BM2, तो क्या हो जाएगा? V1/F1 और ये हो जाएगा F2/V2। V1 कितना है भाई? V1 मान लेते हैं कोई भी एक तरफ का ले लो, जैसे 220 ले लो मान लो, तो ये हो गया 220। फ्रीक्वेंसी कितनी थी इंडिया में? 50। वहां पर फ्रीक्वेंसी यूएसए में थी 60 और वोल्टेज कितना था? आधा हो गया था 110, तो ये हो गया 110, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12/5, मतलब ग्रेटर देन 1 ही आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। यानी BM1 BM2 से बड़ा है, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रिक्वायर्ड होगी इंडिया में वो ज्यादा होगी उस ट्रांसफार्मर के लिए इन कंपैरिजन टू यूएसए, ठीक है। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि जो नो लोड करंट ड्रॉ करी जाएगी वो यूएसए में कम होगी
और इंडिया में ज्यादा होगी, क्योंकि इंडिया में जो फ्लक्स डेंसिटी है वो क्या है, इंडिया में फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा है, तो इंडिया में नो लोड करंट ज्यादा ड्रॉ करेगा, इंडिया में ज्यादा नो लोड करंट ड्रॉ करेगा। नो लोड करंट ड्रॉन वुड बी स्मॉलर फॉर ऑपरेशन इन यूएसए एज कंपेयर टू इंडिया, तो ए तो सही है, ठीक है। फिर ये बात कर रहा है एडी करंट लॉस के बारे में। एडी करंट लॉस को हम कैसे रिलेट करते हैं, ध्यान से देखो। एडी करंट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज। तो 1 और 2 के कंपैरिजन में अगर हम एडी करंट लॉसेस को देखें, V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर, V1 कितना है 220 और ये कितना है 110, तो ये हो जाएगा 4। यानी कि इंडिया में जो लॉसेस हैं वो अमेरिका के कंपैरिजन में 4 गुना है। The eddy current losses score would be approximately 44% higher while operating in the USA compared to that in India। एक सेकेंड जरा मैं देखूं कि इसका सही ऑप्शन क्या है, सही आंसर क्या है, एक सेकेंड देखने दो मुझे। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमएसक्यू नहीं है। तो ये 44% वाला गलत है, क्योंकि हमने जो निकाला है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये तो 4 टाइम्स आ रहा है सीधे, तो 44% कैसे हायर हो सकता है, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी की अगर मैं बात करें, द पीक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर वुड बी हायर व्हाइल ऑपरेटिंग इन द यूएसए, ये तो गलत है। फॉर सेम लोड करेंट द लॉसेज वुड बी हायर इन यूएसए कंपेयर टू दैट इन इंडिया, ये भी गलत है, क्योंकि जो कोर लॉसेज हैं वो कहां ज्यादा होंगे, कोर लॉसेज इंडिया में ज्यादा होंगे, तो वो भी गड़बड़ है, वो भी गड़बड़ है। तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अच्छा, ये 3 फेज ट्रांसफार्मर के कनेक्शन का है, 3 फेज ट्रांसफार्मर के कनेक्शन। देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका है क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो इसमें कनेक्शंस इसने किए कैसे हैं, जरा ध्यान से देखना। जो ए वाला साइड है, कैपिटल वाला, इसको हम हाई वोल्टेज साइड कह देते हैं, तो इसको मैं मान लेता हूं, दूसरा कलर यूज करते हैं, इसको मैं मान लेता हूं A2, इसको मैं मानता हूं A1, ये हो जाएगा स्मॉल a1, ये हो जाएगा स्मॉल a2, ठीक है। ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा स्मॉल b1, ये हो जाएगा स्मॉल b2, ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा स्मॉल c1, ये हो जाएगा स्मॉल c2। अब जरा ए हाई वोल्टेज साइड में देखो, हाई वोल्टेज साइड में अगर ये है तुम्हारा B2 और B1, ये है B2 और ये है B1। अब जरा देखो B2 किससे जुड़ा हुआ है, B2 जुड़ा हुआ है A1 से, B2 जुड़ा हुआ है A1 से, तो ये हो जाएगा A1 और ये हो जाएगा A2, और A2 किससे जुड़ा हुआ है, A2 देखो जुड़ा हुआ है C1 से, A2 जुड़ा हुआ है C1 से, तो ये हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा C2, मतलब B1 C2 से जुड़ा होना चाहिए, B1 C2 से जुड़ा हुआ है परफेक्टली। तो हमने प्राइमरी साइड का, हाई वोल्टेज साइड का तो बना लिया। अब सेकेंडरी साइड का देखो, तो A1 A2 की जो पोलैरिटी है वो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज साइड दोनों में सेम है, तो इसका मतलब हमें सेम फेज मिल जाएगा। तो मान लो मुझे अगर B फेज बनाना है या A फेज बनाना है, तो A1 A2 अगर ऐसा है तो A1 A2 ऐसा आ जाएगा, ये आ गया A1 और ये आ गया A2। अब जरा ध्यान से देखो, लो वोल्टेज साइड में A1 या A2 से कौन जुड़ा है, A2 से जुड़ा है B1, A2 से जुड़ा है B1, तो B1 है कुछ इस तरीके से, ये है B1, ये हो गया B2, और B2 किससे जुड़ा है, देखो B2 जुड़ा हुआ है C2 से, B2 जुड़ा हुआ है C2 से, B2 जुड़ा हुआ है C2 से, और ये हो जाएगा C1। कहानी हो गई कंप्लीट। अब जरा ध्यान से देखो, अब अगर आप इसमें देखो कि कितना फेज एंगल का डिफरेंस आ रहा है, तो ये जो फेज एंगल का डिफरेंस आपको मिलेगा ना,
ये मिल जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री मिलने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका जो क्लॉक रिप्रेजेंटेशन है, उस क्लॉक रिप्रेजेंटेशन में यहां आ जाएगा 11, यहां आ जाएगा 10। ये आपका हो गया हाई वोल्टेज, और जो लो वोल्टेज साइड है आपको 60 डिग्री देना है, मतलब 30 डिग्री के 2 स्लॉट्स। तो ये एंगल क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग इसको कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे, डी दोनों डेल्टा में है, लो वोल्टेज वाइंडिंग वो भी डेल्टा में है तो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो लो वोल्टेज साइड है वो कहां पर है 10 पर है, तो ये हो जाएगा डी डी 10। सो व्हाट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, क्लॉक रिप्रेजेंटेशन डी डी 10, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। अब देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये एक तरीके से करंट ट्रांसफार्मर पे बेस्ड रिले वाला क्वेश्चन है, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें इसने किया क्या है, इसमें आपको करना क्या है कि IA, IB और IC, IA, IB, IC ये इसने आपको दे रखा है, और जो मेन करंट ट्रांसफार्मर है इसका रेशियो है 3:5, 3:5। तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि यहां लाइन में जो करंट आ रही है, ठीक है, मान लो इसको मैं बोल दूं IA, इसको मैं बोल दूं IA डैश, इसको मैं बोल दूं IB डैश, और इसको बोल दूं IC डैश। IA डैश, IB डैश, IC डैश, मतलब मेन करंट ट्रांसफार्मर के बाद जो करंट आपको मिल रही है लाइन में, वो मान लेते हैं कि IA डैश, IB डैश, IC डैश है, तो वो क्या हो जाएगी, तो IA डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/300 IA। IB डैश क्या हो जाएगा 5/300 IB। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, वो आप करके चेक कर लेना, उसमें हमारा टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो जाएगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये जो IA डैश, IB डैश और IC डैश है, ये हमें मिली है लाइन करंट। ये जो लाइन करंट यहां पर हमें मिल रही है, मेन करंट ट्रांसफार्मर के बाद यहां पर जो लाइन में हमें करंट मिल रही है, अब ये जो लाइन करंट्स हैं इनको यहां पर डेल्टा ट्रांसफार्मर बनाया गया है, और जो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है उसकी रेटिंग क्या है, उसकी रेटिंग है 2:1, उसकी रेटिंग है 2:1। अब ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि जो डेल्टा बनाया गया है, जो डेल्टा बनाया गया है, उस डेल्टा की जो करंट है वो क्या है, उस डेल्टा की करंट मैं मान लेता हूं IA डबल डैश है, तो वो क्या हो जाएगी 1/2 IA डैश। इसी तरीके से IB डबल डैश क्या हो जाएगा 1/2 IB डबल डैश, और IC डबल डैश क्या हो जाएगा 1/2 IC डैश। अब ये आपको जो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है उसकी सेकेंडरी की करंट मिल गई है, उसकी सेकेंडरी की करंट मिल गई है, लेकिन वो आपसे पूछ क्या रहा है, डायग्राम में देखो जरा, वो आपसे पूछ रहा है IAR। IAR अगर देखोगे, अगर मैं यहां से देखूं डेल्टा से, तो जो IAR आपको दिखेगा, IAR ये आपको दिखेगा IA डबल डैश माइनस IB डबल डैश, IA डबल डैश माइनस IB डबल डैश, क्योंकि जो लाइन करंट है उसको अगर आप डेल्टा करंट से रिलेट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब इसमें आपको वैल्यूज रख के सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 8.954, और इसका एंगल आ जाएगा 4.105 डिग्रीज। ये आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिले का है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है रिले का है। अब देखो इसमें क्वेश्चन ने क्या किया है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करी है। क्या कंफ्यूज करने की कोशिश करी है, इसने कहा है कि द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिएक्टेंस रिले इज गिवन बाय x लेस देन 1 ohms। मतलब इसने रिएक्टेंस डायग्राम में बताया कि x की वैल्यू 1 के बराबर या उससे छोटी होगी तो ही रिले ऑपरेट करेगी, वरना नहीं करेगी। x रिएक्टेंस है एज कैलकुलेटेड बाय द पोजीशन ऑफ रिले, इट इज इट्स ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक इन द एडमिटेंस प्लेन। एडमिटेंस प्लेन कौन सा हो जाएगा, GB प्लेन हो जाएगा। जैसे रिएक्टेंस प्लेन क्या होता है, RX प्लेन कह सकते हैं, इंपीडेंस प्लेन। उसी तरीके से अगर हम
एडमिटेंस प्लेन बोलेंगे तो उसमें आर हो जाएगा जी और एक्स हो जाएगा बी। अब ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी कंडीशन हमें ये बताती है कि ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक का रीजन क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं एडमिटेंस लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, 1/z, ये क्या हो जाएगा 1/r प्लस जे एक्स। इसको रैशनलाइज करो, r माइनस जे एक्स अपॉन आर माइनस जे एक्स, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू r अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि जे स्क्वायर क्या है -1, और ये क्या हो जाएगा माइनस जे एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम कह रहे हैं g, और ये जो वैल्यू है अगर मैं इसको यहां पर माइनस लिख दूं, ये जो वैल्यू है इसको हम बोल रहे हैं b। अब आपको करना क्या है, करना है आपको रिलेट करना है, यू हैव टू रिलेट। g की वैल्यू क्या है, g की वैल्यू है r अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें किसी भी इक्वेशन में आप लिमिटिंग केस के लिए रख दीजिए x इज इक्वल टू 1, तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस एक्स अपॉन -1/1 प्लस आर स्क्वायर, और यहां पर भी आर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि x की वैल्यू तो हमने 1 रख दी है। अब आपको करना क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को यूज करना है और r को एलिमिनेट करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, g और b के बीच में एक इक्वेशन मिल जाएगी, और वो इक्वेशन मैं आपको बताता हूं। वो इक्वेशन डायरेक्टली आपके पास आएगी g स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 0, जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक सर्किल की इक्वेशन बनेगी जी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 1/4। एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। अब इसको आप रिलेट करो रिले के ऑपरेटिंग पॉइंट से। आर एक्स प्लेन में जो रिले का ऑपरेटिंग पॉइंट है वो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो उसको अगर आप जीबी प्लेन में ट्रांसफॉर्म करोगे तो ये क्या रीजन हो जाएगा, ये रीजन हो जाएगा उस जीबी प्लेन में जो सर्किल की इक्वेशन आपको मिली, जो सर्किल मिला है उसके बाहर का एरिया। बाहर का एरिया का मतलब क्या हो गया, जी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1/2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें, विच वन इज द करेक्ट वन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपसे उसने जो टर्न्स रेशियो दिया था ट्रांसफॉर्मर का, वो उसने आपको दिया था एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर, वो उसने आपको दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, क्लास में हमने कभी पढ़ा हुआ है, डिस्कस किया है, बट कभी पूछ लेता है कभी नहीं पूछता है। अब देखो इसमें किया है, जो ट्रांसफॉर्मर की अगर आप करंट की इक्वेशन देखोगे तो कॉम्प्लेक्स में आप कैसे लिखोगे, वीपी आईपी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू वीएस आईएस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। बट अगर आप करंट की डायरेक्शन देखोगे तो यहां पर आपको एक माइनस साइन भी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अब इसको अगर आप देखो वीपी अपॉन वीएस, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस आईएस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अपॉन आईपी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब वीपी अपॉन वीएस को आप किससे रिलेट कर सकते हो, वीपी अपॉन वीएस को आप रिलेट कर सकते हो टर्न्स रेशियो के मैग्नीट्यूड से, टर्न्स रेशियो के मैग्नीट्यूड से, या सिंपली ए से, बिकॉज ए इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसको अगर आप यहां रखो माइनस आईएस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अपॉन आईपी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और दोनों तरफ अगर आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लो, दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लो, तो ये आ जाएगा आई एस इज इक्वल टू माइनस ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आई पी।
तो बेसिकली ये दो इक्वेशंस आपको यूज करनी थी वीपी वीएस और आईपी आईएस को रिलेट करके। अब ये कह रहा है कि आपने सेकेंडरी पे रेफर कर दिया। सेकेंडरी पे रेफर करने का मतलब क्या हुआ? सेकेंडरी पे रेफर करने का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट एडमिटेंस था, उसको हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई कह लो, वाई टी कह लो। अब ध्यान से देखो, जब आपने सेकेंडरी पे रेफर किया तो वीएस की वैल्यू क्या हो गई? वीपी अपॉन ए। क्या हो गई? वीपी अपॉन ए। वीपी अपॉन ए, ये क्या हो गया? वीएस। अब यहां से जो करंट आ रही है वो क्या होगी? इधर से हो गई करंट आईएस, और आईपी करंट क्या हो जाएगी? ध्यान से देखो, आईपी करंट क्या हो जाएगी? आईपी करंट क्या हो जाएगी? ध्यान से देखना। अब ये जो माइनस मैग्नीट्यूड है ना, वो साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो जाएगी ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आईपी, ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आईपी, ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आईपी। अब इसमें आपको सिंपली क्या करना है? केसीएल केवीएल लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा? वीपी अपॉन ए माइनस वीएस, ओके, इज इक्वल टू, इसको माइनस भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू, या इसको मैं करंट के अगर टर्म्स में लिखूं, करंट के टर्म्स में लिखूं तो करंट आई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आईपी, ये किसके बराबर हो जाएगी? वाई, और वोल्टेज हो जाएगा वीपी अपॉन ए माइनस वीएस। सॉरी, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ना, ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो एक तो आपको इक्वेशन मिल गई आईपी, वीपी और वीएस में, आईपी, वीपी और वीएस में। दूसरी इक्वेशन कहां से मिलेगी? दूसरी इक्वेशन आपको यहां से मिल जाएगी, ये मिल जाएगी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन कहां से मिलेगी? दूसरी इक्वेशन मिलेगी यहां से, इस वाली इक्वेशन से। ठीक है, यहां पर अगेन आप आई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आईपी, इसकी वैल्यू रख देंगे वीपी वीएस के टर्म्स में, तो दूसरी इक्वेशन आपको यहां से मिल जाएगी। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आई होप आपको जो आंसर मिलेगा, आई थिंक डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिर्फ आपको वैल्यूज अब रखनी है और कुछ नहीं करना है। जो कॉन्सेप्चुअल वाली बात थी वो मैंने डिस्कस कर ली, थोड़ा फटाफट से इसको कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। अब देखो इसमें क्या बोला है, ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ये हमने लगभग पावर सिस्टम की पहली क्लास में हर जगह डिस्कस किया है। वोल्टेज दे रखा है वीएम साइन ओमेगा टी, सिंगल फेज है। करंट दे रखी है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। ठीक है, और आपसे पूछा है कि एवरेज पावर डिसिपेटेड ओवर हाफ साइकिल करेस्पॉन्डिंग टू ओमेगा। अब यहां एक छोटा सा ग्लिच है, अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर लिखता हूं तो वो क्या हो जाती है? P1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस क्यू साइन 2 ओमेगा टी। तो अगर आप ओमेगा के रेस्पेक्ट में हाफ टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो 2 ओमेगा के पीरियड में क्या हो गया? कंप्लीट साइकिल हो गई। अब कंप्लीट साइकिल में तो ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा P, और P है क्या? Vm अपॉन रूट 2, Im अपॉन रूट 2, और ये है कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? Vm Im अपॉन 2 कॉस थीटा। आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको ओमेगा पे ध्यान देना था। सो सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54। अब देखो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में उसने क्या किया? दो केसेस दिए। एक केस दिया है जिसमें वोल्टेज मैग्नीट्यूड दे रखा है सेंडिंग एंड जनरेटिंग, मतलब G1 के एंड G2 के एंड पे, और बीच में Z दे रखा है। तो देखो जो केस 1 दे रखा है, केस 1 में देखो लाइन का इंपीडेंस क्या दे रखा है? 0.75 एंगल 0, मतलब ये क्या हो गया? प्योरली रेजिस्टिव। ये तो क्वेश्चन, इसमें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी। और जो केस 2 दे रखा है उसमें लाइन का इंपीडेंस देखो जरा क्या दे रखा है? ये दे रखा है 0.75 एंगल 90,
मतलब क्या हो गया, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव। अब आंसर पढ़ो भाई, जो केस 1 है उसमें रियल लॉस ज्यादा होगा, रियल लॉस इन केस 1 इज मोर देन केस 2, और जो रिएक्टिव लॉस है वो केस 2 में ज्यादा होगा। तो ए और डी, ए और डी एमएसक्यू था तो इसका ए और डी सही आंसर हो जाएगा, ए और डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का है ये। कौन सा क्वेश्चन नंबर है भाई, क्वेश्चन नंबर है 58, क्वेश्चन नंबर है 58। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें 2 जनरेटर लगे हुए हैं, ठीक है, दोनों पे आपको लोड की टैपिंग दी हुई है 100 मेगावाट 184 मेगावाट, ठीक है, PG1 PG2, और दोनों की कॉस्ट इक्वेशन दे रखी है, कॉस्ट इक्वेशन दे रखी है और लॉसेस भी दे रखे हैं। अब ध्यान से देखो, जो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेशन इक्वेशन है, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेशन इक्वेशन है, वो क्या बोलती है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय द पेनल्टी फैक्टर इज कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इज द लैग्रैंजियन मल्टीप्लायर। अगर मैं जनरेटर 2 के लिए देखूं, क्योंकि यहां पर जो लॉस की इक्वेशन दे रखी है ना, PL 0.001 PG2 माइनस 50 होल स्क्वायर, तो ये सिर्फ PG2 पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं सीधे सीधे PG2 पे निकाल लेता हूं, तो IC2 कितना हो जाएगा, IC इंक्रीमेंटल कॉस्ट फॉर द सेकेंड जनरेटर ये हो जाएगा डेल C2 अपॉन डेल PG2। तो PG2 के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो तो कितना आ जाएगा, 0.002 PG2, और ये आ जाएगा सिंपली प्लस 50, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट तो ये आ गया। अब इसका पेनल्टी फैक्टर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/1 माइनस डेल PL अपॉन डेल PG2। जरा देखो पेनल्टी फैक्टर क्या है, पेनल्टी फैक्टर फॉर द सेकेंड जनरेटर ये हो जाएगा 1/1 माइनस डेल PL अपॉन डेल PG2। तो इसको जरा PG2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, डेल PL अपॉन डेल PG2, तो ये क्या आ जाएगा 0.002 PG2 माइनस 50, बस इतना लिख देना है, तो ये हो जाएगा 0.002 PG2 माइनस 50। ये हो गया आपका पेनल्टी फैक्टर। तो आपको क्या करना है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट फॉर द सेकंड जनरेटर मल्टीप्लाइड बाय पेनल्टी फैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, सिर्फ और सिर्फ एक अननोन है दैट इज PG2, और जैसे ही आपने PG2 निकाला, वो PG2 आपको उठाकर कहां रखना है, वो PG2 आपको उठाकर रखना है इस इक्वेशन में, और आपको लॉस मिल जाएगा। जो मेरे पास आंसर आ रहा है दैट इज 19.75 टू 20.25, और ये आएगा मेगावाट में, ये आएगा मेगावाट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मशीन का क्वेश्चन है, मशीन का क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर का। ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है एक बैलेंस 3 फेज सप्लाई इज गिवन टू ए 30 किलोवाट 4 पोल 400 volts 50 hertz wound rotor induction motor is star connected stator and rotor winding, the motor is driving a constant load torque। कहानी खत्म। जैसे ही लोड टॉर्क कांस्टेंट हुआ, मतलब S/R का रेशियो क्या करना है, कांस्टेंट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, S2 अपॉन R2 इज इक्वल टू S1 अपॉन R1। और ये क्या कर रहा है, जो सेकेंड केस है उसमें क्या कर रहा है, एक एक्सटर्नल नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब R एक्सटर्नल जो है वो कितना है 0.27 ओम्स पर फेज, रोटर सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो इसकी जो स्टेडी स्टेट स्पीड है वो कितनी हो जाती है, ये कनेक्ट करने के बाद 1404। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1404 इसको मान लो केस नंबर 2, और इसमें निकाल लो स्लिप फॉर द सेकेंड केस, ठीक है। 1500 आरपीएम इसकी सिंक्रोनस स्पीड है, और फर्स्ट केस में जो स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, फर्स्ट केस में स्पीड दे रखी है 1476, ये हो जाएगी N1,
और ये हो जाएगी N2। तो N2 के रेस्पेक्ट में S2 निकाल लो, N1 के रेस्पेक्ट में S1 निकाल लो, S बाई R के रेशियो को बराबर कर दो, तो आपका एक्चुअल पर फेज रोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस निकल आएगा, जो मेरे हिसाब से 0.09 ओम्स पर फेज है। कितना आ रहा है? 0.09 ओम्स पर फेज। तो दोस्तों ये थे आपके पावर सिस्टम और मशीन के क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी सेशन में, और गेट 2027 के लिए जम के लग जाइए। जिसका भी पेपर अच्छा नहीं हुआ है उसको घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपका हो, बट आपका वक्त आएगा, ये तय है। मिलते हैं फिर किसी सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। Okay, now let's discuss question number 15. This question is from electromagnetic field theory. The question says that a uniform ring charge of radius capital R carries a total charge capital Q. Which one of the following options correctly quantifies the magnitude of force on a point charge of strength small q kept at the center of the ring? So we have a ring of radius capital R. On this ring, capital Q charge is distributed uniformly, and there is a small q test charge placed at the center of this ring. We need to find the net force on this test charge Q. So with the help of symmetry, we can say that the net force on this small charge Q will be 0. Answer is Calcutta. Or if you want to solve it mathematically, then what you can do is you can assume a small length dl here. Okay, on this small length dl there is a small charge dq. Because of this small charge capital dq, there will be some force on this test charge, and the force will be in this direction. Now if we take one more small length dl which is diametrically opposite to this, here at this position, again on this small length we have small charge dq, and because of this small charge the force on this test charge will be in this direction. Now you can see that these two forces are equal in magnitude and opposite direction, so they will cancel each other. So with this reasoning I can say that because of this total charge distributed on this ring, the net force on this small charge, on this small test q charge, will be 0. Okay, so it's a basic simple reasoning, and on the basis of this reasoning you can say that the net force on this small charge will be 0. Okay, let's move to the next question, and next question is question number 16, again from EMFT. Okay, so let's move to question number 16. Okay, so we have this question number 16. This is again from EMFT. The question says a positive point charge with velocity 5 cap enters in a region having electric field 4 cap, and the magnitude of the magnetic field in the region is -6 cap. Which one of the following statement is correct for the force on the charge as it enters the region? This is MCQ question. So now this direction is I cap, this direction is J cap, and the direction upward is K cap. Okay, this direction is K cap. So the velocity of the point charge is in this direction. Okay, and the electric field is in this direction. Electric field is in J cap direction. Magnetic field is downward, -K cap direction. Okay, now according to Lorentz force, we can say that the net force on this charge Q will be QE plus QV cross B. So because of electric field, the force on this positive charge will be in the same direction of electric field, and because of magnetic field, the force on this positive point charge will be perpendicular to this magnetic field. The options are given in terms of force. So let's read option A. The force will be along the magnetic field but perpendicular to electric field. This is wrong. The force will be along electric field but perpendicular to the magnetic field. This is correct. Okay, this is MCQ, so only one option has to be correct. Other options
must be wrong. Okay, you can read these options also. The force will be perpendicular to both electric and magnetic field. No, it's not correct. Magnetic field does not exert any force on this charge. This is also wrong. Okay, so this was question number 16 from EMFT. Let's move to next question, and next question is question number 26. Let me see. Yeah, it's question number 26, and this question is from power electronics. So let's move to question number 26. Okay, so this is question number 26. Now this question says a single phase voltage source delivers a current of this to a load. Okay, so we have a voltage source. We have a voltage source of 325 sine of 100 pi t volts. Okay, and this voltage source delivers current IT to a load. We have a load here. Okay, we need to find the load power factor up to 2 decimal places. Again, this is MCQ, so only one option has to be correct. Okay, now the current has harmonic. This is 100 pi t, this is 300 pi t. Okay, current has harmonic. So whenever harmonics are there, we need to find the power factor of the load with the help of you can say with the help of Parseval theorem. The power factor will be active power divided by apparent power. This is the formula for power factor. Active power means average power. Now how to calculate average power? So active power will be, let's first calculate the active power. With the help of Parseval relation, we can calculate the active power. This is the expression for voltage and this is the expression for current. So you can say that, okay, let me okay, so there is a little bit of shifting. Anyway, so voltage is this and current is this. So how to calculate active power? It will be 1 by 2 into peak value of the voltage 325 into this current 12 into cos of angle between them. This is sine 100 pi t, this is also sine 100 pi t, so it will be 0. The same frequency component will participate in active power. This component will not participate in active power because the frequency in this component is 300 pi. So current has 300 pi component, but voltage does not have 300 pi term. Okay, so that's why this current component will not participate in active power. So this will be the active power, guys. 1 by 2 peak value of the voltage and then peak value of the current of same frequency into cos of angle between them. This is also sine, this is also sine, there is no phase difference, so you can say that this is cos 0. So it will be 325 into 6. This much of watt is the active power which is delivered by the source. Now how much apparent power is delivered by the source? Apparent power. How much apparent power is delivered by the source? Apparent power is RMS value of this voltage and RMS value of this current. So if we can multiply them, we'll get the apparent power. So apparent power will be 325 by root 2. This is the RMS value of this voltage into RMS value of current. RMS value of current, again we can apply Parseval theorem to find the RMS value. So it will be 12 square plus 9 square. Okay, 12 square plus 9 square. This is our apparent power. Now if we put the active power and the apparent power in this expression, we can find the power factor. This is the power factor seen from the source side. Okay, so we call it input power factor. We call it input power factor. This is seen by the source. Now what about the load power factor? So there is a confusion here. Let's first calculate this. So active power is 325 into 6 divided by 325 by root 2. This root 2 will again come out from the square root. Okay, and 12 square plus 9 square. So 12 square plus 9 square, if you calculate, then it will become 15. Okay, take the root of this, so you'll get 15 here. Okay,
325 will cancel, and this will become 12 by 15. This is 2 will go into the numerator, so 12 by 15. Now you can cancel with 3, so this is 4, this is 5, so 0.8. okay, so input power factor is 0.8. but what about the load power factor? Since in this problem the circuit is not provided, it is not mentioned how the load is connected to the source. Okay, only the source voltage and the current delivered by the source to the load is given. Okay, circuit is not provided, so we are assuming that load is directly connected to the source. Okay, we are assuming that the load is directly connected to the source, and this current is the load current, and this voltage is the voltage across the load. Then only we can solve this, and in that situation the load power factor will be same as the input power factor. Okay, answer is Bombay. But there is a confusion in this problem. The confusion is we don't know how the load is connected to the source, because if you remember, let's say there is a half wave rectifier. Okay, let's say we have a circuit like this. So we have a resistive load and we have this source. The source voltage is, let's say, pure sine wave, and we know that the current will not be pure sine wave. The current supplied by the source to the load is not pure, it contains harmonic, it contains different frequency components. Now in this situation the input power factor and the load power factor will be different. These two things will be different. Okay, but in this problem it is not mentioned what is the voltage across the load. This is the source voltage and we don't know how the load is connected. Okay, so we don't know the voltage across the load. We know the current through the load because this is the current supplied by the source to the load. Okay, so let's assume that the load is getting the same current, but we don't know the voltage across the load, we don't know the circuit. So there is some confusion in this problem. But if we assume that the load is directly connected to the source, then only we can solve the problem, and then only we will get the answer as 0.8. Okay, and the answer provided by the IIT's gate authority is again 0.80. But let me tell you guys, this option is correct only if we assume that the source is directly connected to the load. Okay, I hope you got the point. So let's move to the next question, and the next question is question number 28. This question is, again, you can take it from power electronics or analog electronics or maybe circuit theory, network theory. Okay, so let's move to question number 28. So we have this question number 28. Now this question says, consider the circuit shown in the figure. A gate pulse Vg is applied between interval T0 and T1. Let me zoom this. Okay, so this is the problem we have. Now between T0 and T1 we apply the gate pulse to this MOSFET. Okay, after T1, during the MOSFET turn off process, it experiences a voltage overshoot. It means the voltage across this MOSFET is plotted here. It says that before T0 there was no current, so there was no drop across this, there was no drop across this. So you can say that at this point we have VDC, the same voltage will appear at this point, and this point is grounded. Okay, so the voltage across this device, drain and source, the voltage between the drain and source will be VDC itself, and VDC is provided to us. When the pulse will come, when the gate pulse will come, this will be sorted. I'm assuming that this device is ideal, so the switch will be closed and the voltage across it will become 0. Okay, this will become 0. Okay, 0 is given, and the current will start flowing like this. The entire DC voltage VDC will appear across this inductor because this point will be grounded. This switch is sorted now, so this point will be grounded and this point is connected to VDC. So you can say that the constant voltage is applied across the inductor. If the voltage across the inductor is constant, then the current through the inductor, this current IL will start rising linearly. Okay,
from T0 to T1. The current will rise linearly. How much current will rise? I mean, up to what level it will reach? For that, we can calculate the current IL equal to initial current through the inductor is 0 plus 1 by L. Voltage across inductor is VDC dt from T0 to T1. So it will become VDC T1 minus T0. Okay. Yeah. This will become T1 minus T0 divided by L. So this is the peak value. From T1 from T0 to T1, this IL has reached its peak value. The peak value is this. Okay. So this is the peak value. Now, at this T1 instant, we remove this gate pulse. If the gate pulse is removed, then what will happen? This switch will turn off. If the switch is turned off at T1, then what will be this voltage? VDC. Obviously, we have this current. The inductor has some current. Current is flowing through the inductor. Previously, the current was flowing through the inductor and you switched it off. Now, this current will start flowing through this circuit. Okay. This current will start flowing through this circuit. It means RL circuit will work and this current will decay exponentially. I mean, the initial value is, at this instant, let's assume that this is the instant 0 for this circuit. Okay. So, initial current is VDC by L, T1 minus T0. This current will start flowing and it will decay exponentially. R by L, T. Okay. RF by L, you can say. So, this current will decay exponentially. Now, because of this current, there will be voltage across this R. Okay, and diode is short circuited. Obviously, we are assuming the diode is ideal. Now, what is the voltage at this point? So, if we know, we already know that this point is VDC, and what about this voltage? This voltage is this current into this RF. So, how much voltage will appear here? RF into VDC by L, T1 minus T0 e to the power minus R by L T. I am assuming that this instant is 0 instant. Okay. So, after this instant, this voltage will appear across RF. I am taking RF as R. Okay. So, don't worry. Now, we know this voltage is VDC, and if we add minus to plus, obviously, if we go from minus to plus, it will be added. Okay. So, the voltage at this point will be this VDC plus this voltage. Okay. VDC plus this voltage. R into VDC by L, T1 minus T0 e to the power minus R by LT. This is the voltage that will appear here. And you can see that this voltage is plotted here. So obviously from this graph you can see that, okay, let me clear this diagram. Okay, so from this diagram we can see that if we increase the value of R, obviously the voltage appear at this across this device will be more. Okay, you can see that if RF is R1, then it is at the highest value, and then RF equal to R3, it is in the middle, and RF equal to R2, this is at the lowest level. So clearly R1 has to be the greatest, and then R3, and then R2. So the option has to be R1 greater than R3 greater than R2. This has to be the correct answer. Okay, so answer is Bombay. I hope you understood it. So this was again a very simple switch based problem. Okay, so let's move to the next question. Next question is from electromagnetic field theory, question number 32. Okay, so let's see question number 32. Yeah, now you can see question number 32 on your screen. The question says that given that f equal to sine y x cap plus cos x y cap plus 5z cap, we need to find the surface in closed surface integral over the unit sphere S centered at the origin. How to calculate that? With the help of divergence theorem, we can say that closed surface integral of any vector field can be represented as divergence of f dv. It means the closed surface integral can be
written in terms of volume integral like this. So somehow if we can calculate this divergence of f and then take the volume integral on this unit sphere, then we can calculate this value. Okay. Now what is divergence? It's in the Cartesian coordinate system. So divergence of f will be equal to del by del x of sine y plus del by del y of cos x plus del by del z of phi. Okay, this is 0, this is 0, and this is 0. So you can say that divergence of f is 0. If divergence of f is 0, then the closed surface integral will also be 0. Answer is 0. Okay, so this was question number 32. Next, question number 34. Let's move to question number 34. Yeah. So we have this question, question number 34. Consider the circuit shown. Assume that the diode D is ideal. The supply voltage is this, 325 sine of 100 pi t. L is given as 500 microhenry. R is 10 ohm. The peak diode current will be. We need to find the peak diode current. Okay, so how to do that? Look, the supply voltage is like this. Initially there was no current, let's say, and assume that this is grounded. So if it is 0, this voltage will be at VST. Since there was no current initially, so let's assume that there is no drop across these elements, so this voltage will be 0. Whenever this VST is greater than this 0 volt, this diode will conduct. And assuming that the diode is ideal, okay, this diode will conduct whenever this VST is greater than 0 volt. It means in the positive cycle, the diode will conduct. So if the diode will conduct, if the diode starts conducting, then this current will start flowing. But there is a problem, and the problem is the current has to start from 0 because the inductor has no previous current. Current has to start from 0. It means we need to write the equation for the current with the help of AC transient. So the equation for the current will be Vm by Z sine of omega t minus theta z. This is the steady state part. What about the transient part? At t equal to 0, it will be Vm by Z sine of minus theta z. So it's negative. To make it 0, I have to add Vm by Z sine theta z e to the power minus r by omega L omega t. So this is the expression for the current IT. This is the expression for the current IT. What is this Z? Z equal to R plus J omega. Omega is 100 pi into L, 500 microhenry. Okay. So now you can see that it will become plus J. Now what is this value? Let me calculate this for you. 100 pi into 500 into 10 s to the power minus 6. Okay. So it comes out to be 0.157. Okay. This is Z. So if I convert this into polar form, 0.157 iota. Okay. So if you convert this into polar form, then it will become almost 10 angle 0.9 degree. So it means the load is purely resistive, you can say. Okay, load is almost resistive because R is much less than this omega L. So now what we can do is we can put this value. Vm is 325, so 325 by Z. Z is almost 10 sine of omega t minus 0.9 degrees plus Vm by Z sine of 0.9 e to the power minus R. R is 10. Okay. Yes, R is 10 divided by omega L 0.157 omega t. Okay. So this is the expression for this current IT. Now you can see that this value is negligible. This value is very negligible. Moreover, this value is very high. Okay. So this component will decay at a very fast rate. You can assume that this current is almost this value, and this 0.9 is neglected. Okay.
So if I draw the current wave shape, approximately the current wave shape, then the current wave shape will follow, just give me, yes, this current wave shape will follow this voltage wave shape, okay. The only difference is the amplitude, almost same. There is a difference, there is a lagging of 0.9 degrees. 0.9 degrees very less, okay. This is 0 degree, this is 90 degree, this is 180 degree, and we have to lag this current by 0.9 degree. 0.9 is nothing, okay. So you can ignore this 0.9 degree also. So this is the expression for this current. Now what about the peak value of this current? Peak value has to be 32.5. so it should be 32.5, but let me tell you guys, the answer has to be little more than this, because this term should also be there, na? And rather this is not exactly 32.5, this is actually 32.48 something, because this value is more than 10, okay. So this value has to be 32.48 something like that, okay. And we have to add this term also, we have to add this exponential term also, but this exponential term is also already neglected, because it has very small value. If you calculate it, it has very small value, and the rate of decay is also very large. It means the exponential term will decay very fast. The only term that will survive is this value, and according to this expression we can calculate the peak diode current. So it will be around 32.5 ampere. So this is pure approximation. We will not be able to solve this ideally. Why? Because to find the maxima of the current, first we need to take the derivative of this current and make that derivative equal to 0 and calculate that instant at which the current has reached its maximum value. Once you get that instant at which the current has reached the maximum value, put that instant in this expression and calculate the maximum value of the current. But we cannot calculate that particular instant at which the current reached at its maximum value. Why? Because if you take the derivative of this and make it equal to 0, it will be a non-linear equation, and we cannot solve it. We have to apply the numerical methods to solve it, but the answer will be approximately like this, okay. So ideally we cannot solve it, but approximately we can solve this problem, and the answer has to be 32.5, near about 32.5, okay. So this can be the correct answer, okay. Let's move to next question, and the next question is question number 42. Question number 42. This question is again from power electronics, or you can say from network theory, okay. Question number 42. Yes. Now in this question, an electrical component has the voltage this, and the current through that component is this, okay. So we have an electrical component, we don't know about the component, okay. The voltage across this component is provided, and the current through this component is also provided. We need to find the average power dissipated over a half cycle corresponding to omega, okay, corresponding. So we have this voltage and the current is little lagging, current is lagging by angle this theta. So what about PT? So instantaneous power. So PT is the product of these two terms, Vm Im sine omega t into sine of omega t minus theta. So we can divide it with 2 and multiply it with 2, okay. Now we can simplify this. So it will be Vm Im by 2 sine A into sine B. So it will become cos of A minus B, cos of A minus B minus cos of A plus B, okay. So this is the expression. So if I simplify it, it will become Vm Im by 2 cos theta minus Vm Im by 2 cos of 2 omega t minus theta, okay. So this is the expression for PT. Now we need to find the average value of this PT over half cycle. Now which half cycle? Power has 2 omega frequency, voltage and current has omega frequency. So we need to find, we need to take the half cycle corresponding to this omega term.
What does it mean? If you take voltage source or current voltage value or current value, this is the full period, and let's say this axis is omega t. So full period is 2 pi radian and half period is pi radian. Half cycle means pi radian. Okay. But remember, with respect to power, this pi radian will act as a full cycle. Okay. This pi radian act as a half cycle if you take this term or this term, if you take the omega frequency term. If you take omega frequency term, this pi radian will correspond to half cycle. Okay, and this half cycle will act as a full cycle for this instantaneous power. Why? Because the instantaneous power has 2 omega frequency. So if I plot this power, then the power expression will be something like that. Okay, something like that. Okay, so from this point to this point, we have again pi radian. We have again pi radian because it has double frequency. So time period is halved. So in this expression, in the voltage expression, the period is 2 pi. In the power expression, the period has to be pi. It means here the half cycle will represent full cycle in the power. Okay, I hope you understood my point. Now, what is the average value of this? So average value under full cycle of this will be 0. Actually, the full cycle of power is half cycle corresponding to omega. Remember this. Okay, so the average value under half cycle corresponding to omega will be only this component. Okay, I hope you understood my point, and the answer is Calcutta. Okay, answer is Calcutta. Let's move to the next question. And the next question is question number 47. This is again from power electronics. So let's move to question number 47. Yes. So in this question, there is a voltage source inverter, single phase voltage source inverter. Consider a single phase voltage source inverter circuit feeding an inductive load L, assuming that the power MOSFET switches are ideal. Power MOSFET switches are ideal. Okay. S1 and S2 are switched on during the first 10 microsecond, and then S3, S4 are switched on during the next 10 microsecond. The switches in the same leg are the switched in a complementary fashion. Neglect the dead time. The waveform of the inductor current IL is in the steady state is the triangular with a peak value of 5 ampere shown in the figure. The RMS value of the current through the switch S1. Now in S1 he is considering diode also. Why? Because there is a power MOSFET, and in power MOSFET, remember one point. Excuse me. In power MOSFET, remember one point. The diode is inbuilt. Okay. This is the part of the switch. Okay. So if I am considering S1, then we have to take this diode as well. Okay. Previously, when we were solving on the memory based situation, I mean the memory based problem we are solving, then we are taking the switch like this. Okay, if there is a switch like this, then we will not consider diode as a part of switch. It's separate thing. Or when we take IGBT, IGBT does not have inbuilt antiparallel diode. So again, we have to take this diode separate from this switch. But in MOSFET, this feedback diode is a part of the switch itself. It's embedded. Okay, it's the part of the MOSFET. So you can say that the switch, the switch has this diode part also. Remember this. Okay, it's again a very interesting problem, but fortunately you must have solved it correctly. But in place of this MOSFET, if IGBT were given or the switch like this is given, then the situation will be different. Okay, but in this case we have to consider the diode as a part of the switch. I hope you understood it. So now let's see from where to where the S1 is conducting. Okay, from 0 to 10 microsecond, S1 is on. S1 is on, and you can say that the current is negative. The current is flowing backwards. So current is flowing through the diode, but it doesn't matter. We have to consider the diode current as the current of the switch. Okay, so this current is flowing through S1. Anti-parallel diode,
why this diode current is flowing. So you can say that this same current is flowing through the switch, okay. And then from 5 microsecond to 10 microsecond, current is positive. It means the current is flowing through this MOSFET, okay. So this is also the current through the S1. So this is the current through S1, okay. S1 and S2 you can say. Now this current will flow through S3, S4, and again this current will flow through S1 again, okay. I hope you got the wave shape. So the wave shape of current S1 will be like this. It will be 0 up to this point and then go like this, okay. This will be the wave shape of current through S1. We need to find the RMS value of this current, okay. Now what is the RMS value of this current? Let's first write the equation of this. Or to calculate the RMS, you can shift the origin at this location, because that will be easy to solve, no? If you shift the origin at this point, RMS will not change. But what will the equation of this this line? So to find the equation of the line, first we calculate the slope. So slope will be 5 minus 0 divided by 5 microsecond, okay. This is the slope, 10⁻⁶. This is the slope of this line. So you can say that IL is equal to 10⁻⁶t, okay. This is the expression for this line if I assume that this is the origin line, okay. If you take that this is origin, then 10⁻⁶t will be the current expression, okay. You can see that at t equal to 0, this is 0 instant now. T equal to 0, the current is 0, and this will become 5 microsecond. At 5 microsecond, if you put 5 microsecond here, IL will reach to 5 ampere value. So this is the expression for this current. Now we can calculate the RMS value of this. RMS value will be 1 upon the period. What is the period of this wave? What is the period? So you can see that the period is, I mean, this point is repeating at this location, okay. This same you can say edge is repeating at this location. So period is 20 microsecond. So 1 by t integration 0 to 10 microsecond, 0 to 10 microsecond. You have to take no, it's not 0 to 10 it's from minus 5 microsecond to 5 microsecond, okay. So don't make such a mistake, because we have taken origin at this location, okay. So what I need to do is I have to write from minus 5 microsecond to 5 microsecond, okay, and take the square of this 10⁻⁶t and take the square of this dt, okay. Whatever this value will come, take the root of this. So if you simplify this, it will become 1 upon 20 into 10⁻⁻⁶. This is 1 by t. This 10⁻12 will come out from this integration. It will become t square, and integration of t square is t cube by 3, okay. So 3 I have taken out, and t cube, so upper limit is 5 into 10⁻⁻⁶. Take the square of that, minus lower limit, so minus, and it has to be cube, okay, minus 5 into 10⁻⁻⁶ cube, okay, and take the root of this. Whatever this quantity comes out, take the root of that, okay. So how to calculate that? It will become 125. So in the numerator we have 10⁻12 into 10⁻18 minus 18, okay, 10⁻−18, okay. This is 125 and plus this is 125, so 250 will come here, okay. I hope it is correct. Please check my calculation, because I'm not so good at calculation. 10⁻⁻⁶, okay, and take the root of this. I hope it is correct. So this will cancel. This is 250 by 60, so 0 will cancel again. 25 by 6, okay, 25 by 6, and take the root of this, okay. So what is this value? Let's see. Root of 25 by 6. So the answer come out to be 2.04. Answer is Bombay, okay, 2.04. So this is the switch current. But let's say the IGBT were there, then the switch current will be purely different, okay. I hope you understood it. So you can say by luck you just I mean the switch saved your answer, okay. Anyway, let's move to the next question. The next question is question number 48, again from power electronics. So let's move to question number 48. So question number 48 is I mean you can see that this question number 48.
This is based on DC-DC converter. The question says, consider boost converter circuit shown. Assume that the semiconductor devices are ideal. In steady state, the inductor current rises linearly from 0 to 6 in the first 10 microsecond and falls linearly from 6 to 0 in the next 10 microsecond of every switching cycle as shown. The load resistance is 10 ohm and the capacitance is very large, 500 microfarad. Neglect the ripple in the output voltage. We need to find this VDC. Okay, now we can see from this inductor current, I can say that the conduction is just continuous. If the conduction is just continuous, then the ratio of this output voltage by this VDC, V out over VDC, since it is boost converter, so it will be 1 over 1 minus D. Now what is this D? You can say that during this during this 10 microsecond, the switch is on. Okay, current is rising, the voltage across inductor is positive, which is VDC, current is rising. Okay, and then next 10 microsecond, the switch is off. The voltage across this inductor is negative and the current is falling, and current is just continuous. So you can say that D has to be half, because for half, because this 10 microsecond it is on and next 10 microsecond it is off. So that's why D is half. So you can say that V0 upon VDC is 1 upon half. If I put the value of D, so it will become 1 over 1 by half. So 2 will come in the numerator. Okay. Now this VDC will become V0 by 2. Now what is V0? How to find V0? To find V0, we need to calculate this current. How much current will flow through this resistor, that we need to calculate. Now how to do that? We know that the inductor current is this. Okay. During this off period, the diode will conduct and average value of the diode current will flow through this resistor. During this on period, the switch will conduct, and you can say that the average value of this switch current and the average value of this diode current has to be same, because the interval is equal. For this switch and for this diode, the interval is equal. So you can say that these two average has to be same. Okay, because the interval are same, and you can say that the average value of this inductor current is equal to average value of the switch current and average value of this diode current. So if I draw the diode current, this will be the diode current. Okay, this will be the diode current in orange color. This is the diode current, and the average value of this diode current is half of the average value of this inductor current. So average value of the inductor current is 3, and if you take half of that, it will be 1.5. So average current is 1.5. Same average current will flow through this resistor. So and the resistance value is 10 ohm. So you can say that 10 into 1.5 is the output voltage. V0 comes out to be 15 volt. If you know V0, then VDC will be 7.5 volt. Okay, so the answer is Calcutta, 7.5 volt. I hope you understood it. It was again very easy. There is one more way. First you draw the diode current. Okay, this is the diode current. Take the average of this. Average is area under one period divided by time period. So you can take the area and divide it by 20 microsecond. You will get 1.5. So this is the average current of the diode. That average current will flow through this resistor. So that average current multiplied with this resistance will give you the output voltage, and then divide the output voltage by 2, you'll get VDC. So VDC is 7.5 volt. Okay. So this was question number 48. Let's move to the next question. Next question is question number 51 from electromagnetic field theory. Okay. So let's move to question number 51. Okay. So in this question, what it says is, the figure shows an arbitrary, say, planar conducting loop A in the XY plane. The two non-intersecting region of areas A1, so it has area A1 and it has area A2, within the loop are subjected to magnetic field B1. In this area, the magnetic field is B1, and the direction of B is all, B is a vector field. Okay, so the direction is also provided. In this region, the magnetic field is B2. Okay, what is the expression for induced RMS voltage in loop A? This is the loop A. We need to calculate the induced RMS voltage in this loop A. So we know that the induced voltage is minus d phi by dt.
Okay, so in this outer loop, what is the total flux phi? So phi will be equal to the flux through this area A1 plus the flux through this area A2. Now what is the flux through this area A1? So let's call it phi 1. So phi 1 is B1 dot A1. A1 is in the k cap direction. I am assuming that orientation is in this direction. So area is in k cap direction. Okay. So B is this, and if you take the dot product of this B1 with the k cap, then you will get m by root 2 sine of omega t into area A1. Since A1 is in k cap direction, so only this component will give the dot product, and this is also k cap and this is also k cap, so k cap dot k cap is 1. Okay, so this will be my phi 1. Now what about phi 2? Again I am taking the area direction in the k cap, okay, so this is A2 and this is B2, so again B2 dot A2, this will be the flux through this area. Now what is this flux? Minus n by root 2 cos of 2 omega t plus pi by 4 Again this component will give the dot product, so this is k cap and this area is again in k cap direction, so dot product will be 1, and obviously here I have to write A2. Okay, so this is my phi 2, flux through this area A2. So total flux phi is equal to phi 1 plus phi 2, so it will become MA1 by root 2 sine of omega t minus NA2 by root 2 cos of 2 omega t plus pi by 4. Okay, so this is total flux phi. Now we need to find the induced EMF. So minus d phi by dt will be, take the derivative of this, so it will become MA1 omega by root 2 integration, differentiation of sign is cos of omega t, and here also it will become minus or rather plus. Okay, wait, let's first not consider this negative sign. Okay, the negative sign we'll take later. Okay, just take the derivative of this. So if you take the derivative, the first term will be this and the second term will be NA2 into 2 omega by root 2 and sine of 2 omega t, sine of 2 omega t plus pi by 4. Okay, so this is d phi by dt. If you take minus d phi by dt, then minus sign will come here. Okay, this is the induced EMF. Now how to calculate the RMS value? You can apply Parseval relation. Okay, so RMS value will be 1 by 2 root of 1 by 2 into square of this MA1 omega by root 2, take the square of this plus square of this. This is NA2 2NA2 omega by root 2, take the square of this. Okay, so this is the RMS value we have. Okay, so how much value you will get? If you simplify it, it will become m square A1 square omega square by 4, this is the first term, plus this will become n square A2 square omega square by this is by 1. Okay, and take the root of this. So if you take 4 as LCM, then I think you will get this Agra answer. Okay, please check question number 51. Okay, so this is the correct answer. Again, this was a simple problem. Let's move to the next question. Next question is from instrumentation. This is question number 57. Okay, so let's move to question number 57. Okay, so again this is very simple question. In this question it says that the resistance values of a Wheatstone bridge are shown in the figure. P is 2000 ohm, this is 2000 ohm, Q is 500 ohm, okay, R is 3000 ohm, and this is E 50 volt with some internal resistance Rin. Okay, Rin, let's not care about Rin. Okay, the galvanometer has resistance 50 ohm. Okay, it has some resistance of 50 ohm.
the value of the resistance S for balanced condition. So we need to find this S for balance. It's a simple Wheatstone based problem. So what we can do is we can take the ratio of 2000 and 3000, and this must be equal to 500 upon S for the balance condition. Okay, so this will cancel. So S will be it will become 1500 divided by 2, so it will be 750. Okay, so the answer is 750 ohm. Easy peasy. Okay, let's move to next question, and next question is question number 61, again from power electronics. Question number 61 from power electronics. Okay, yeah, so you can see this question number 61. In this question we are provided with a circuit, and the voltage source is given as 100 sin 100t. There is an ideal diode and a resistor and a DC voltage source. Now we need to find the average value of the current through the diode. So again, it's very simple. What we can do is, first let's draw this voltage wave. This is a pure sine wave. Okay, and we have this obviously the peak value is 100, and we have this 50 volt. Okay, this is the DC voltage source. Now from when this diode start conducting, obviously the diode start conducting when this side voltage, I mean if I assume this as ground, then this side will become VST, and let's assume that initially there was no current, diode was open, so this is VST and this will be 50 volt. Okay, there will be no drop in this resistance because no current is flowing. This 50 volt will appear here. Okay, so whenever this Vs is greater than 50, the diode will conduct. It means the diode start conducting at this instant. Okay, at this instant, and it will conduct up to this instant. So the current wave shape will look like this. Okay, and then from here the current wave shape will look like this. Okay, this will be the current wave shape. We need to find the average value of this. How to find the average value? The period of this current wave shape will be 2 pi. So 1 upon 2 pi, and take the area, this area, because if this is 0, it will become 2 pi. Okay, so you can say that this point will repeat at this point. Okay, so 1 upon 2 pi area. How to find the area? We need to find this point and this point. So how to find it? This is 100 sine of omega t, and equal to 50 you can write. Okay, so omega t come out to be pi by 6. Okay, so from pi by 6 to pi minus pi by 6, this point is pi minus pi by 6, 5 pi by 6. Okay, and what is this expression for this current? Current expression is 100 sine of omega t minus 50. Okay, divided by r. R is 10. Okay, so this is the current expression. This is the current expression, and I have calculated the area from pi by 6 to 5 pi by 6 divided by 1 upon 2 pi. So this is the average value we get. Now what is the average value? If you can calculate this, I think you will get the answer 1.04 or maybe 1.05. Okay, please check which option, I mean which answer you are getting. I think it is around this value, so you can calculate it yourself. It's very easy peasy. Okay, so guys, next question is question number 63 from EMFT, and this is the last question from my side. So let's move to question number 63. Question number 63. The question says a uniform spherical volume charge distribution of radius 2 meter. So we have a uniform spherical volume which is uniformly charged, obviously. Okay, there is some charge distribution, and the radius of this volume is 2 meter, centered at origin. This is origin. Okay, has a strength of, okay, the volume charge density is given, and this is 3 by pi into 10 to the power minus 6 coulomb per meter cube. Okay, this is the volume charge density. A point charge of strength, okay, point charge strength is given pi into 8.85 into 10 to the power minus 12 coulomb, is moved from one location minus 304 to 004. Okay, from this location to this location the charge is moved. Okay, this point charge is moved from this location to this location.
in Cartesian coordinate system. The relative permittivity of the medium is 1 and the coordinate values are in meter. The work done during this process is. Now how to calculate the work done? It's very simple. The work done is equal to the test charge Q into change in potential. Okay, let's call it A and this point B. So VB minus VA. Okay. Now what is VB and what is VA? Since this radius is 2 and this length is 5 and this length is 4, so you can say that these locations are outside from this spherical charge distribution. So from these two locations, this spherical charge distribution will act as a point charge, and because of this point charge, the potential at this A with respect to infinity will be total charge Q divided by 4 pi epsilon naught RA. This is the potential at A with respect to infinity, and potential at B with respect to infinity is total charge in this sphere Q divided by 4 pi epsilon naught RB. So what is VB minus VA? Excuse me. So VB minus VA comes out to be Q by 4 pi epsilon naught 1 upon RB minus 1 upon RA. So this is the change in potential. Multiply with this, with this small charge Q, you will get the work done. So how to find this value? So it's very easy. What is this total charge Q? So total charge Q is this volume charge density into volume of this sphere. Since it is constant, so you can just multiply with the volume of this sphere to calculate the total charge Q. So it will be 3 by pi into 10 to the power minus 6 into 4 by 3 pi r cube. Okay, this is the total charge Q. Okay, into this small charge Q, this total charge Q into this small charge Q. Small charge Q is pi into 8.85. This is epsilon naught, so pi epsilon naught I can write. Okay, this is the small charge Q. Divide by 4 pi epsilon naught. Divide by 4 pi epsilon naught into 1 upon RB. RB is 4 minus 1 upon 5. Okay, so this is the work done. Okay, let's calculate it. Pi epsilon naught will cancel here. Okay, this pi will cancel here, this 4 will cancel here. Okay, this 3 will cancel here. Okay, so in the numerator you have 8 into 10 to the power minus 6, and this will become 1 by 20. Okay, so if you simplify it, you will get this will go into microjoule, so 8 by 20 microjoule. Okay, now what is this value? This value comes out to be 0.04, I suppose. 0.04. Please check. Or 0.4, I think. Wait. Yes. Now, I mean, if you take, you can write it like this: 0.8 by 2 microjoule. Okay. So it will become 0.4 microjoule. Okay. And the range is given as from 0.38 to 0.42 microjoule. So this is within the range. Okay, so this is the correct answer, guys. So I have solved EMFT, power electronics and instrumentation questions. I hope you enjoyed. Thank you from my side.